course, experience gives you everything. Experience teaches you everything. So definitely, sales knowledge grows when you grow in your experience. I will try to share my experience with you. It's not, it should, I will try to make it as interactive as possible. I will welcome all the questions from you and try to use my experience to gain knowledge for you. That will be my submission. So I will just to give you a background about this interactive session. I will be going through my experience of sales and developing customers, new customers, as well as maintaining the existing accounts. Just to give you a background of this presentation, I have put this first 2 or 3 slides. So, who is the salesperson? Most of the times, people think that sales is product selling. I believe it's not product selling. It's brand selling, and it's selling yourself to the customer. I strongly believe a good salesperson can generate good sales only if he is able to sell himself to the customer. What customer needs, what customer looks into a salesperson is his confidence, his knowledge, his experience of handling issues and overcoming the problems with good solutions, solid solutions. That's where customer starts believing you. That's where customer starts building confidence into you, and then he starts procuring products through you. Very simple, but then it needs a lot of skills. It's not easy. Selling a product to a customer is not easy. What you need to build is skills within yourself to sell those products. So, as briefed by me here, you are representing your company. What does it mean? You are representing your company means you are representing the brand, you are representing the management, you are representing the goals and views of the management to the customer. You are the link between the company here. The management is sitting here in their central place, and you become their extended hand. So it is very necessary for all of you to understand what are the company goals, what are the company views, what are the company targets, and how you are going to help company to achieve those targets. And the last thing, how you are going to convince or convey all these management policies, views and goals and targets to the customer. Very important. At all the times when you are with the customer, you are talking to the customer, you are writing an email, you are making the presentation, you should be always aware that you are representing your company. That's very important. If you have that concept of company at the back of your mind, I'm sure you can become a good salesperson. When you are in front of the company, you are the owner of the company, who is representing the company. So the customer or the person, the key person at the customer is looking at you as an owner of that process, owner of that product, owner of the company. That's why what I have mentioned, you are reflecting the company image.
while you are at the bus stop, while you are at the railway station, when you are at some tea store, you are always representing your company. A manufacturing person, a quality person, or a design person, whatever they do outside the company, no one will notice it. But you are at a tea store, you are at a railway station, any customer can know, "Arey, ye na banda, I know him." That's where your identity starts. If you have those cautions at the back of your mind, so you are at all the times, 24 hours in a day, you are on the job. You are representing your company and repeating it again and again. It helps. Believe me, it helps. That feeling inside you builds a confidence inside yourself. Visiting your customer with your products. You don't carry any products with you, definitely not. But when a person at the customer end looks at it, he should remember RX cylinder, sonarboard, gripper, tubings and fittings, all those components, air filter regulators. He should see it through you. You are delivering product features and benefits. Very important. Now, you have, almost all of you have experience in other companies also. So you are well aware, and all of you are from pneumatics background. Maybe experience, some of them you have 1 or 2 years experience, some have 10 years experience. Then I'm sure you have product knowledge. If not, you have a backup team who has a product knowledge. So you are presenting those products. It's not possible for everyone or an individual person to have 100% knowledge of the technology or of the product. Definitely not possible. After 30 years of experience also, I can tell you, I know very few things about pneumatics. It's a vast field. It's a very vast field. And unless and until we start selling features and benefits of the product, no one is going to buy this product. If you tell anyone, "Sir, ये मेरा cylinder है, ले लीजिए," no one is going to buy. The selling starts where you know the differentiation between yourself as a product and your competitor. Unless and until you know the differentiation between yourself and your competitor, you won't be able to sell a single product. Now, please ask me any doubts or anything you do not understand. Feel free, huh? You can ask silly questions also. There is no issue. Let me tell you, I won't shy away from sharing any of my experience. I can tell you n number of things if you ask me questions. That's what Ashish told all of you. Try to use me as much as possible. Yes. And that's what, if you are able to sell product features and benefits, then you are going to convince your customer to buy your products. Till that time, if you tell them, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कम है, मेरा प्रोडक्ट का डिलीवरी आपको सेकंड डे मिल जाएगा, 4 घंटे में मिल जाएगा, I will give you 1000 cylinders within 1 week of time, solenoid valves मेरे पास, I have 1000 variations of solenoid valves, no one is going to buy it. Believe me. I can tell you very further. I have experience of genetics, but genetics was in the early stages of penetrating markets. And I can tell you one thing. We all started selling with
genetics air filter regulators. That was the first product genetics launched in market. And there were many players already. SMC was with their modular design, Festo, Shavo, Plaka, and whatnot. Not easy. At this stage also, today's stage also, the highest sale component wise or genetics is air filter regulator. Yes. It's the bread butter of their It's bread butter, and I'm not sure the percentage of turnover right now, but till 2012, 2013, 40% of their business was coming from air filter regulators. That's how strongly we have pushed those products in market. It was not product sale, again I'm telling you. It was not product sale. It was concept sale. It was the features and benefits of the product which we sold in the market. So you should know what are the features of your product that differentiate your product from other products. Now the gimmick behind this is everyone has cylinders. Everyone has the same design. Everyone has the same manufacturing technology. And the look and the whatnot is same. But then what is the responsibility of a sales team is to create a differentiation in the market. That's how SMC launched their products. SMC launched their product to low friction cylinders, high frequency solenoid valves. They have just added the single word in their tagline, and the product got sold. That's the differentiation between yourself as a team of sales members and your competitors. And you go to anywhere. Nowadays, Siemens, ABB, they don't need any sales team, but still they have huge number of sales team, and they still have they are still doing the advertising. They are still participating in exhibitions and promotional sales. Just because they want to differentiate between themselves and the market. That's very important. That's the key of sales. Responsibilities of a salesperson. Building up your loyal customers. Now, if any one of you can tell me or share their views on this loyal customers, or who is a loyal customer? जो पेमेंट टाइम पे देगा. Okay, good point. Connection with business trust. Okay. You are running here. Use a regular business, more correct. So how can we identify the customer is loyal for us? उसको कल को कहीं से No customer is loyal. Sir, Let me tell you very frankly, no customer is loyal. उसको दो पैसे कहीं कम मिला वो उधर चला जाएगा. Divert हो जाएगा. हो जाएगा, Customer कभी loyal लेकिन नहीं. How can let we- me share my experience with you. The product which I was selling, they were not the cheapest in the market. They were in the middle range all the time. Black tea bottle, green tea, black tea. Yes. The loyal customer starts building when he starts believing in you. नहीं यार, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाने दे, मुझे डिलीवरी का हो, मुझे प्राइसिंग का हो, मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का फीचर्स चाहिए, मुझे थोड़ा सा ये नहीं थोड़ा सा चेंज करके चाहिए, ये बंदा मुझे हेल्प करे. कस्टमर का ब्लाइंडली ट्रस्ट रहना चाहिए. They have to trust कस्टमर on को the. फर्स्ट थिंग, दैट इज द फोरमोस्ट. ये देगा तो सही देगा. माइंडमैन का ब्रांड नेम उसके सामने होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट बिफोर एनी सेल्स पर्सन. दैट इज द अंडरलाइन लाइन. वो तो होगा ही, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो माइंडमैन फेस्टो और एसएमसी अगर कंपैरिजन होता है उसके बाद, तो माइंडमैन को बिजनेस क्यों देगा?
अगर उसके सामने जो सेल्स पर्सन वो उसके उसमें उसको कितना ट्रस्ट है, he becomes your loyalist. I can tell you very proudly, I can tell you there are at least 50 customers across India. They still consult. They still come down to me for any issues or for any solution. I'm not with you. I have a lot of experience. And through experience only, you start building these relationships. But then loyal customer is definitely your own property. You go to any brand, you change your from SMC to Mindman, that customer looks at you as reliable person. He is a trustworthy person. The responsibility, developing new prospects. New prospect is a new customer, a new potential. May not be a direct customer. I think all of you know direct customers and indirect customers. Direct customers are those who are placing purchase orders. Indirect customers are those where you are working, doing a sales and marketing activity, but someone else is placing the orders. Like, if I can give you example, Tata Motors. I go to their engineering department where they conceptually build the machines for their own use, and machines are built by some of their builders. So Tata Motors का जो builder है, he becomes your direct customer, and Tata Motors becomes your indirect customer. But then you have to put in more efforts at the indirect customer to gain their business. That's indirect customer. Direct and indirect customer. और एक छोटा सा कंसेप्ट है फैक्ट्री ऑटोमेशन एंड प्रोसेस ऑटोमेशन. मोस्ट ऑफ यू नो your product will be mostly 90% products will go into factory automation. Some of the products which will be developed through experience will go into process automation. The requirements of factory automation and process automation are totally different. Why I am telling you this thing is, you may be attracted to a potential customer who is having good requirements of your products, but he is a process automation customer. Should you go there or not? You should not. Because you do not have products which is the requirement of process. Process automation people need a product which is more robust, which is more sturdy, and which can give you service for 15 to 20 years of life. That's the typical process automation requirement. Factory automation, I need very quick functioning. I need very compact designs. I need very quick response. 2 साल चलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 साल में उठा के फेंकना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है. मैं वो खर्चा उठाऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा चाहिए मुझे 1000 साइकिल्स पर मिनट मिलना चाहिए, मुझे 3000 स्विचिंग मिलना चाहिए सोलर वर्क. That's factory automation. Very aggressive. Very aggressive. And those you have those products. Achieving sales target, of course, the sales team is earning for the complete organization. It's earning money. It's generating sales. बाकी manufacturing, accounting, purchasing, ये सब लोग सेल्स टीम की तरफ देखते हैं. ये बिजनेस कब लाएंगे, ये कितना बिजनेस लाएंगे. Keeping credits in control, of course. Main factor. Yeah, of course, main factor. Not the rest of it, but then that's one of the responsibilities of the salesperson. These days, it's very critical because
profit margin, turnover, it's all financial. And it all depends on how efficiently and effectively you are turning the credits off. One of the key factors in controlling credits is dealer. He gives you fixed orders, he gives you firm orders, and he has a very finite or definite credit period. He cannot go beyond his credit limits. और भैया तेरे को 30 days का credit limit है, जरा dispatches में stop करो। ये direct customers को आप नहीं बोल सकते। Direct customer के पास में आपको limitation आता है। आपको future business देखना होगा। Definitely there are dealer monitoring customer dealer relation, that's very important. Customer को मैंने कस्टमर को डेवलप किया है for some of its limitations, commercial limitations, delivery limitations, or some transactional limitations. I have transferred this customer to a dealer. लेकिन उसका relationship कैसा है? Is the customer comfortable? Is my dealer comfortable working with that customer? Both ways. वो एक साल तक पैसा ही नहीं देगा. Dealer won't be interested. Definitely not. तो डीलर के पास जाएगा, आपके पास ये 100 क्वांटिटी मेरे पास स्टॉक में होना ही चाहिए था, क्यों नहीं है? ऐसे पूछा। Not done. Thank you so much. And the last one is reporting to the management. क्या रिपोर्टिंग करते हैं मैनेजमेंट बीइंग अ सेल्स टीम? रिपोर्टिंग क्या करना है आपको? I put this point very specifically and I will come down to it. Leader for management. You become I for your management. Very good. Even else. मार्केट सिनेरियो क्या है अभी? Yes. What is the competitors New view? product. Yes. Budget. Customer के new product. Sorry, competitor के new product. New technology. New technology coming in the market. Like 20 years back, these compact cylinders were not there. With no one. Now Western के पास थे ना एसेंसी के पास थे. This technology can be one of the manufacturers in Germany. So, new technology, yes. New product. आपके कस्टमर के पास से अगले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में कितना बिजनेस आएगा, ये मैनेजमेंट को मालूम होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप तो सेल्स कर रहे हैं, उनको पूरा पीछे का प्लानिंग करना होगा, पैकेट, इन्वेंट्री, परचेस, मैन्युफैक्चरिंग, कैपेसिटीज और कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लानिंग, उनको साल का प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर सिलेंडर उनको 2 दिन में देना है तो उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 1 साल से काम करना पड़ता है। तो यू बिकम देयर इंफॉर्मेशन सोर्स, सेल्स टीम। मैं कहां पर विजिट के लिए जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, मेरा प्लानिंग क्या है, मेरा ऑफर फनेल क्या है, मेरा ऑर्डर स्टेटस क्या है, कौन सा ऑर्डर आएगा, कौन सा ऑर्डर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, लॉस्ट ऑर्डर एनालिसिस। उससे भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये ऑर्डर क्यों किया, व्हाई डिड आई विन दिस ऑर्डर। वेरी क्रिटिकल।
very small thing. Why did I win this order? It's huge importance. It carries huge importance. Lost order के analysis में common causes होते हैं. कंपटीशन का प्राइस ज्यादा है. कंपटीशन का प्राइस कम दिया, Delivery नहीं दे रहे. कंपटीशन के पास बेटर प्रोडक्ट था, कंपटीटर के पास कंबाइंड प्रोडक्ट था, कंपटीटर के पास कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट था, डिलीवरी ऑन टाइम नहीं था. डिलीवरी ऑन टाइम. लास्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत खराब था. आपका प्राइस कम है, आपका डिलीवरी अच्छा है, ये है वो है वो है. लास्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत खराब. लॉस्ट अकाउंट, लॉस्ट ऑर्डर के लिए एनालिसिस कॉमन है. विन ऑर्डर. Why? There could be n number of reasons. ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल कस्टमर है. मेरे कस्टमर को एक XYZ कस्टमर ने रेफरेंस दिया था, स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि यही प्रोडक्ट लीजिए. There can be 1,000 reasons why I will win the product. And then you start building a data based on that win order analysis. The core subject today, sales skills. I will call this as not sales skill. Acquiring a customer. वो कस्टमर के ऊपर मेरा नाम छपना था. डिमांड इसका न्यू पी भी आपके सामने आएगा तो उसको मेरा नाम सामने रखना चाहिए. Sales skills are the characteristics and competencies sales representatives depends on the support customer in making purchases and resolving issues. What is characteristics? Characteristics is quality within the person. Quality is within the person. And what are competencies? What is your core strength? What are his strengths? What is your core strength? ये दोनों के मेरे inherent qualities and the qualities acquired by me. I build a confidence to support customer in making purchases and resolving issues. That's sales. Oh, a salesperson is going to help me to purchase my product and resolve my issues. ये एरा पैक ये सिर्फ प्रोडक्ट्स लेंगे. एरा का एक जब उन्होंने लॉन्च किया था न्यूमैटिक्स, आई एम टेकिंग दिस एज जस्ट अ केस. दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, नो डाउट. ट्रक भर के उनका मत ले जाता था दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में. ट्रक के ट्रक निकल जाते थे वहां से. सिर्फ डीलर के पास प्रोडक्ट को डंप करो. एक साल तक डीलर को पैसा नहीं मांगो. एक साल तक. लेकिन ऐसे के ऐसे ट्रक भर के वापस आ गए प्रोडक्ट पे. So you are not resolving issues, but you are becoming the issue for the customer. You are yourself becoming the issue for the customer. That's where era आज भी वो एक्सपीरियंस की वजह से few people नहीं आए. मुझे नहीं चाहिए. 20 साल हो गए. 2003 में ये till it continued till 2005. मुझे एक बात बताओ, आपको कभी ऐसा हुआ है एक कस्टमर के पास गए और आपकी गलती की वजह से, आपकी कंपनी की गलती की वजह से कस्टमर प्रॉब्लम में आ गया, बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम में आ गया, एंड ही अगेन कंसिडर्ड यू फॉर द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? सर के साथ भी शेयर किया हुआ है. जी जी. अपना हमारे इंजीनियरिंग है, शेयर करो सर को. अपना कस्टमर है कन्वेयर मैन्युफैक्चरर, ACM पीच के लिए फ्री लाइन का कन्वेयर बनाते हैं.
मतलब कुछ मिसकम्युनिकेशन मेरा भी था, अपने कंपनी का भी था, उसकी वजह से उसमें मतलब सर भी थे साथ में, मतलब काफ़ी अच्छे से हमको सुनाया। और उसके बाद मतलब सर ने मैनेज किया था, आशीष सर ने, फिर से अभी अपने पास काफ़ी उनके उसके बाद अप्रॉक्स 4 to 5 lakhs के ऑर्डर कंटिन्यू आ चुके हैं। अभी रिसेंट में भी एक ऑर्डर आया है। आपने एक सेंटेंस यूज किया, सर ने कुछ किया। सर ने क्या किया? ये आप क्यों नहीं कर रहे? वही वेरी जनरल क्वेश्चन, डोंट टेक इट पर्सनल, डोंट टेक इट, क्योंकि आज का टॉपिक है। हाँ, फ्री एकदम फ्रीली डिस्कस करो जो भी करना क्या है। हुआ था उस टाइम पे? आशीष कर पाया या XYZ का पर्सन कर पाया, ये क्यों नहीं हुआ कि मैंने भी किया? Actually, he wants to talk with a senior person of company. ऐसा ही होता है। A salesperson experiences the first heat from the customer all the time. Very bad. Being a four-face, front face with the customer on behalf of my company, तो first hit मुझे ही आता है पूरा। उसके लिए भी तैयारी करना, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। होते हैं सर, रेगुलर होता है। कोई तो रेगुलर होता है, लेकिन फिर उसको रिवाइव कैसे करना है? मेरा जो इमेज खराब हो गया उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूं, ये भी सोचना। Skilled salesperson provide the service using a combination of techniques and knowledge to identify customer needs and connect with them individually. यहाँ पर आप कोई भी सेल्स का पेज ओपन करके देखिए, उसमें ये इंडिविजुअल शब्द वर्ड आ जाता है। कंपनी का कनेक्शन is a different word, different thing altogether. But when it comes to sales, ये individual word हर presentation में आएगा, हर theory में आएगा, हर philosophy में आएगा। Very important, very critical. Individual, ये पूरा आपका जिम्मेदारी है। ये account, ये prospect, ये product, ये brand becomes the responsibility of the salesperson. The person who is in front of the customer. मैनेजर को कुछ लेना देना नहीं, ना इतना हिट जो फ्रंट फेस है, जो हिट उसके पास, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाता है, वो किसी के पास नहीं। Very well said here. Salesperson provide the service using combination of techniques and knowledge. It's not only product knowledge, it's not only selling knowledge, it's not only commercial knowledge, it's a combination of knowledge and technique. और उस हमको क्या करना है? As a salesperson, we have to identify customer needs and connect them with individual. That's sales skills, techniques and knowledge. Sales skills. एक है product knowledge, I believe. That's the basic thing. That's very, very basic product knowledge. At least you should have a superficial product knowledge. सिलेंडर कैसे चलता है, मोटर ड्राइव कैसे होता है, कौन सा कंसेप्ट के ऊपर ड्राइव होता है, गियर में कौन से टाइप, इफ आई एम सेलिंग अ गियर, इफ आई एम सेलिंग अ बेयरिंग, तो बेयरिंग में कितने टाइप के बेयरिंग होते हैं? प्रोडक्ट नॉलेज, सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज टेक्निकल होना चाहिए नहीं, उसके साथ में उसके कॉम्पिटिटर को who is better, किसका टेक्नोलॉजी अच्छा है, मेरा क्या उस पर अलग है। This is all in product knowledge. Product features, product technology, competitors technology, and the differentiation between my technology and competitor technology.
or my product and competitors. That's all product knowledge. Communication skill, identifying prospects and convincing the customer. These are two absolutely critical and important skills that a salesperson must have. If these two qualities, communication skill and identifying prospect and convincing the prospect, if you have some limitation in these skills, I'm sure you will face many problems while generating sales. So we will emphasize. Otherwise, all other data analysis, management skill, reporting, financial awareness. This you gain through your experience. This you gain through your journey along with your company. But communication skill and convincing the customer become the core skills along with product knowledge. So I will go through only these first 2 or 3 skills that are required, or the salesperson has to have them. Communication skill. What is communication skill? Very simple. How you communicate with each other. Discussion. Maybe a verbal discussion, email discussion, WhatsApp chat. It's all very simple. There are people who have done PhD in communication skills. How vast this subject. Also, we have a separate subject in engineering Yes. called CS. Very important, very small, but still very vast, very large when it comes to the meaning of that word communication. The first and foremost important thing as a salesperson is salesperson must have a very short, ready to deliver speech for the customer. अगर मैं एक कस्टमर के पास में जा रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ, उसको एक ईमेल कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पहचानता. So what will be my first speech with the customer? मैंने कस्टमर के पास प्रेजेंटेशन दिया है, उसने मुझे एक ऑर्डर भी दे दिया है. उसके बाद में मुझे मालूम है उसके पास एक रिक्वायरमेंट आया है. What will be my ready to deliver speech to the customer? मैंने 4 साल हो गए वो कस्टमर को हैंडल कर रहा हूँ. कंसिस्टेंटली गिविंग मी बिजनेस, कंसिस्टेंटली. तो मेरा रेडी टू डिलीवर स्पीच क्या होना चाहिए? तीनों सिनेरियो अलग अलग है, तीनों सिनेरियो अलग अलग है, लेकिन what ready to deliver speech, what is that? Akshay, if I am going to a customer, you are coming to, I am your customer, and you are coming to me, how will you introduce yourself? उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स है, बाकी के वर्टिकल्स है, उसके बारे में, हमारे फीचर्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में. What will be your speech? Do you think customer will be interested in all these things? No, Do you sir. think mind man is not known to him? No, sir. What is that? Ready to deliver speech. 4 सेंटेंस में आपका पूरा प्रोफाइल उसको दिख जाएगा. फर्स्ट पर्सन. That's very important. The person creates his impression within first 7 seconds of the face-to-face. Within first 7 सेकंड में आप क्या कर सकते हो? उसके बाद में आपको that is a different ready to deliver speech.
Relative to your speech is nothing but you should introduce yourself, your name, your company name, and your products with some tagline. I am from Mindman Pneumatics. आगे और एक pneumatics का बंदा है. Right? यही होता है. There are so many brands selling pneumatic products in the market. Right. Hello sir, I am Shirish Joshi and I am from Mindman Pneumatics. Oh my God. और एक pneumatics वाला आ गया. आजकल तो ऐसा हो गया है. ऐसा वो सब्जी वगैरह बेचते हैं ना. Pneumatics ऐसे ही हो गया. Yes, sir. Yes, sir. Not only pneumatics, any other. PLC was a very core technology product few years back. अभी गली गली में PLC चल रहे हैं, and that is happening with every product. That's happening with every product. तो आपका इंप्रेशन कस्टमर के ऊपर आने के लिए आपका खुद का एक रेडी टू डिलीवर स्पीच है, जिसकी वजह से कस्टमर को विद इन फर्स्ट 1 मिनट ऑफ योर मीटिंग उसको लगना चाहिए कि नहीं मैं किसी सेल्स प्रोफेशनल के हिसाब से बात कर रहा हूँ. यू आर सेल्स प्रोफेशनल. आपको आपका इंप्रेशन फर्स्ट मिनट में आपको वहां पर क्रिएट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल. आपका वो आपने क्या पहना है, आपने कौन से जूते हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, वो सब तो देखेगा ही क्योंकि आप सेल्स पर्सन हो. उसके साथ में आपका फर्स्ट मिनट कॉन्फिडेंस है वो है. Shirish Joshi. I'm from Supreme Automation and we automate things. Some different tag. So USP of our product. USP of your own along with the brand. आपको सब फर्स्ट 4 लाइन्स में आप क्या प्रोडक्ट बेचते हो, कौन सा ब्रांड बेचते हो, आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, फर्स्ट 4 लाइन्स में आपको फिनिश करना है. 4 लाइन्स से ज्यादा कोई अलाउ करेगा नहीं. इसके बाद एक तो अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है. अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आपको वो अपॉइंटमेंट में फर्स्ट फ्यू वर्ड्स में आपको खुद का इंप्रेशन अलॉन्ग विद प्रोडक्ट, कंपनी ब्रांड, कंपनी व्यूज, ये सब क्रिएट करना है. मैंने जब फर्स्ट टाइम ये सुना था फ्रॉम अ वेरी सीनियर पर्सन, मुझे लगा था क्या ये बोल रहा है. सही में लोगों को रोटेक्स मालूम है. दे विल वेलकम, डेफिनेटली दे विल वेलकम, नो डाउट. लेकिन फिर वो तेरी जरूरत है. शिरीष जोशी की जरूरत क्या है? वो देखेगा इफ आई एम अ बायर, आई एम गोइंग टू कस्टमर, सो ही इज अ बायर. तो वो देखेगा कि हाउ मच कंफर्ट आई विल रिसीव फ्रॉम दिस पर्सन. मेरा जो दिन में पूरा टास्क है, मेरा जो हेडेक है, मेरा जो हेक्टिक शेड्यूल है, इसमें ये बंदा मुझे कैसे हेल्प करेगा. तो वो फर्स्ट 4 लाइन्स में आपको खुद का कुछ स्पीच रेडी करना पड़ेगा. यू हैव टू डिलीवर दैट स्पीच विद द कॉन्फिडेंस. और हर बार उसी कॉन्फिडेंस में विदाउट ड्रॉपिंग अ वर्ड, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, विदाउट टेकिंग अ पॉज, आपको सेंटेंस डिलीवर. वेरी सर, आई एम शिरीष जोशी. I'm coming to you from broadcast. And मैंने पॉज ले लिया, इंप्रेशन खराब हो गया. इंप्रेशन खराब हो गया तो आपको ये क्या करना है, रेडी टू डिलीवर स्पीच आपको बाय हार्ट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. बिलीव मी इट वर्क्स. बिलीव मी इट वर्क्स. एंड देन आप फर्स्ट टाइम कस्टमर के पास जा रहे हैं, आप 10th टाइम कस्टमर के पास जा रहे हैं, आप 4 साल कंटिन्यू जा रहे हैं और 5 साल में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं. एवरी टाइम आपके अंदर से कुछ नया उसको दिखना चाहिए. एंड इट कम्स थ्रू योर स्पीच.
It reflects to your speech. नहीं? होता है every time. How you greet the customer. Very simple. Very basic sales skill. But very impressive. So the ready to deliver speech should include your name, company introduction in the brief, and product range, along with a tagline, your own creation. Body language. Communication skills and body language. Communication skills for sales professional doesn't only compromise verbal but also the non-verbal that is communicated through your body language. मैं मेरा ready to speech बिलीव करूं और मैं कुछ ऐसा करूं, नहीं कहता, मैं कुछ ऐसा करूं. बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपको वहां से बिजनेस चाहिए. Your foremost task and target is आपको वहां से बिजनेस चाहिए. वो इंटेंशन आपके स्पीच में आ रहा है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में से भी वो कस्टमर ने रिसीव करना चाहिए. वेरी वेरी when you approach with confidence and smile, the chances of customer paying attention are very high. Believe me. Think once. ये एक बैंक का कोई सेमिनार था, वो मैंने अटेंड किया था. वो जो मेन स्पीकर था, they made all of us to wait for 30 minutes for that speaker. और आ गए सब वो जो 10-12 सेल्स के लोग थे उनके आ गए. और वो बंदा जो मैनेजर था, जो स्पीच डिलीवरी करने वाला था, वो पीछे से भागते आ गया. सबको क्या लगा कि कोई वेरी इंपॉर्टेंट VIP पर्सन है, जो उन्होंने माहौल तैयार किया उनकी बॉडी लैंग्वेज की. जो 50 लोग बैठे थे वहां पर पार्टिसिपेंट्स, वो 30 मिनट्स हो गए हैं, तो डेफिनेटली दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. उनका अटेंशन भी खींचना था. आप तो कस्टमर के पास बात ऐसा कुछ ये करते हैं. बट वन ऑफ द टेक्निक बॉडी लैंग्वेज, Right. वन ऑफ द टेक्निक्स. बी एन एक्टिव लिसनर. कस्टमर के सामने बैठते हैं, मैंने मेरा स्पीच दे दिया, मेरा प्रोडक्ट है, वो है, या है, डिलीवरी है, ट्रेड्स है, कमर्शियल टर्म्स कंडीशन है, सब कुछ. और कस्टमर आपको कुछ अलग बताना चाहता है. यू आर नॉट लिसनिंग. एक कीवर्ड उसने कोई बोल दिया है, वो कीवर्ड आपने नोट नहीं किया है. यू आर डन. So very important to listen to the customer needs first, what they are looking for, and feedback. आपको आपका प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको कस्टमर की नीड फुलफिल करनी है. पेन एरियाज समझ. पेन एरिया, कस्टमर की नीड आपको फुलफिल करनी है. आपको बिजनेस जनरेशन तभी मिलेगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर तभी मिलेगा जब कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, कस्टमर का प्रॉब्लम एरिया क्या है. वो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो कौन आइडेंटिफाई, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? आप कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर आपको उसका नीड क्या है, उसमें से सिर्फ एक कीवर्ड बताएगा. ज्यादा नहीं बोलते वो, उनको कोई टाइम नहीं रहता. You should be a good listener. Accordingly, tune in your language and make proposal to the customer. Proposal is always not an offer. Proposal all the time is not a technical offer or a commercial offer. Proposal is something that the confidence you show to the customer. Sir, will give you. Sir, मेरे पास में
Yes. एक आइडिया है, एक प्रोडक्ट है, एक टेक्नोलॉजी है विच कैन हेल्प। अगर आपको वो प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, एप्लीकेशन नॉलेज आपको कंफर्म नहीं है, you can always tell the customer, sir, give me 10 minutes, give me 1 day, give me 1 week's time. I will come back to you with a firm solution and it will be either yes or no. आपने कस्टमर की नीड, उसका पेन एरिया, उसकी रिक्वायरमेंट को सुन लिया है, केयरफुली सुन लिया है, and now you are making a proposal. प्रपोजल का मतलब एक काउंटर ऑफर दे दिया, एक ऑफर दे दिया सामने पे। इट्स नॉट कमर्शियल, इट्स नॉट टेक्निकल, सिर्फ अपने उस पर कॉन्फिडेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल कंटिन्यू। बी क्यूरियस एंड आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस। Ask customer relevant questions that will have some relevance with the product. This is one of the best sales communication skill you can develop. You wouldn't generate any sales by pointless preaching. कस्टमर के साथ में और एक बंदा बैठा है, वो दोनों कुछ उनके गांव में क्या हलचल चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप जाके उसके साथ में 2 घंटा बैठे, वो पॉलिटिकल एनालिसिस या फाइनेंशियल सिचुएशन, वो प्राइम मिनिस्टर ऐसा है और वो फलाना वैसा है, आप कितनी भी देर के लिए बात कीजिए, आपको सेल्स जनरेट नहीं होगा। वो बंदा बोलेगा टाइम पास के लिए आके बैठता है, बैठने देना अपने को भी टाइम पास होगा और कुछ नहीं होता। और कुछ, हाँ, आप थोड़ा रैपो डेवलप करिए डेफिनेटली। अगर उसको रियली इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा रैपो डेवलप जरूर कर लेते हैं और टाइम भी। लेकिन अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, आप उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते, नहीं आ रही है ना, आगे बैठता है। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। इफ आई नो ऑल ऑफ योर वाइड एक्सपीरियंस, और मेरे साथ में होता एक कस्टमर था, एक्चुअली नीडी था, मुझे लीड मिला था बॉम्बे के टीम से, इनको स्पेशल सिलेंडर से वो बंदा हमेशा फोन पे लगा रहता था। हमेशा एक दिन उसने टॉपिक निकाल दिया, यार मुझे गाँव जाने है, ट्रेन का टिकट नहीं मिला। मैंने वहां पर बैठ के सब किया, उसका ट्रेन का टिकट हो गया, सब कुछ है। मुझे लगा कुछ तो हेल्प करेगा बंदा, कुछ तो घास डालेगा। 2 साल उसके बाद में कुछ नहीं था। 2 साल क्योंकि मैं उसको कभी पिच नहीं किया, मैं ये दे सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। जब वो बंदा बॉम्बे में आया, मैंने वो अपॉर्चुनिटी लिया और उसको फैक्ट्री विजिट के लिए लेके गया। तब उसको मन लगा नहीं यार, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ये गलती किसका था? मेरा था। आई कुड नॉट कन्वे हिम कि आपका जो प्रॉब्लम है यार, ये तो मेरा रोज का प्रॉब्लम है। रोना शुरू कर दिया बंदे ने सीधा। और बिलीव मी, उसके बाद में 6-7 साल तक वो बंदे ने कहीं नहीं देखा। लेकिन ये ट्रेन का मामला मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। So ask, be curious and ask relevant questions. Curious मतलब सर आपका अभी कस्टमर के सामने बैठे हैं, वो तो आपका पेन, उसका पेन एरिया क्या है वो जाके बताने वाला है नहीं। सर मुझे मालूम है यू आर यूजिंग जेनेटिक्स। अभी जेनेटिक्स के प्रोडक्ट में क्या कॉमन प्रॉब्लम है? रिसेंटली उनके प्रोडक्ट में कहाँ पर फेलियर आया था? रिसेंटली उनका डिलीवरी या सम अदर इशू जो कस्टमर का पेन है, ये आपको मार्केट इंटेलिजेंस होना चाहिए। अगर आपको कस्टमर के साथ में कुछ सेल्स जनरेट करने के लिए डिस्कशन करना है
तो आपको ये सब कुछ मार्केट इंटेलिजेंस होना ही चाहिए। जनरली इसका 100 डाई का सिलेंडर फेलियर हुआ था और उसके ऊपर कैपिटलाइज करके रोफ्लेक्स ने वो पर्टिकुलर सेगमेंट पूरा कैप्चर कर दिया। आई एम जस्ट गिविंग यू अ केस स्टडी। इंटेलिजेंस अभी कहां से आएगा वो भी देखिए। तो आपको रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने हैं, रिलेवेंट क्वेरीज पूछनी है। Ask customer relevant questions that will have some relevance with your product. आपका पीएलसी खराब हो गया था, आपने एबीबी का पीएलसी लिया था, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपका प्रोडक्ट एंड निमैट के प्रोडक्ट के रिलेटेड रिलेवेंस आप उसको क्वेरी पूछो। टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ प्रोडक्ट कुछ क्वेरी पूछो। यू शेयर योर टेक्नोलॉजी, व्हाट यू आर अवेयर ऑफ, क्या आगे 10 साल के बाद में क्या होने वाला है, यू शेयर दैट। You respect it. You will start sharing the pain areas, the critical areas, the need areas, the requirement areas. A pleasant tone. The only thing that can build an impression about your product or service is your voice. अभी अगर मैं आपके साथ में कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा जो अभी का टोन है, अगर थोड़ा सा नीचे जो पिच में मैं बात कर रहा हूं, इफ आई स्टार्ट टीचिंग यू, आपको ये नहीं आ रही है, ये बंद कर दो। शिरीष जोशी वो आशीष के पास शाम को फीडबैक जाएगा, अरे क्या बोर्ड बनने को लेके आया। इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज ऑफ the tone of delivery. It makes a difference because of tone. आप क्या करोगे, आपका पिच क्या है, आपका टोन क्या है। एक लय करके वर्ड यूज करना, जो गाना गाते हैं लोग, वो लोग लय करके वर्ड यूज करते हैं। लय मतलब क्या है, एक तरफ तबला बजता रहता है, एक तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते रहते हैं और उसके साथ में आप गाना गाते हैं। जो सिंकिंग है, यू नो, जो सारे गम पर वो बजा रहा है, आदिम निंदा वो तबला वाला बजा रहा है और उसके साथ में हम गाना गा रहे हैं, इनका सिंकिंग कैसे, उसमें थोड़ा सा अभी ट्यूनिंग में चेंज आया, अच्छे अच्छे गाने खराब हो गए। दैट्स व्हाट टोन और योर मैं लय बोलूंगा, उसके लिए रिदम वर्ड इन इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से टोन में मैं कस्टमर के साथ में बात कर रहा हूँ। मेरा घर पे बीवी के साथ में झगड़ा हुआ है, मेरे बैक ऑफ माई माइंड, मेरा आज सुबह मेरा एक 2 व्हीलर वाले के साथ में झगड़ा हुआ, बैक ऑफ माई माइंड वो दिन भर रहता है, क्या मेरा दिन खराब कर दिया था। वो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है, कहीं ना कहीं आपके लैंग्वेज में, आपके टोन में वो रिफ्लेक्शन आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन, मुझे ये बंदे के पास सेल्स कॉल के लिए भी जाना है और मेरा मेडिकल का, मेरा डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आपके टोन में आने ही होता है। बट व्हेन यू आर विद कस्टमर, द बेस्ट मीन्स फोकस ऑन, यूज प्रॉपर टोन, प्रोफेशनल सेल्स टोन। कस्टमर कितनी बार चिल्लाता है आपको? हमेशा बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, एवरी टाइम। कैन वी यूज फॉल लैंग्वेज अगेंस्ट द कस्टमर? जो टोन है वो हमको मेंटेन करना है। सो speaking a way that makes them comfortable and at the same time stay professional and formal in your approach. फॉर्मल इन योर अप्रोच मतलब क्या है? आप कस्टमर के साथ दोस्त जैसे भी बात नहीं कर सकते, भले वो आपको फ्री हैंड दे दे,
he can be very free with you at times, especially a loyal customer. Especially a loyal customer. You can be very friendly with him. क्यों होगा वो friendly? Because they know about yourself. तो आपके ऊपर जितना confidence है वो Most of the times customer friendly होता है क्योंकि आप उसको खुद के benefit extract करने होते हैं. My experience. उसको खुद के benefit, उसके कंपनी के लिए, उसके purchasing के लिए benefits extract करने होते हैं. इसके लिए customer becomes friendly. Yeah, of course. You should also reciprocate the same feeling. At the same time, you must maintain formal situation. आप आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आप आपके फ्रेंड को रिप्रेजेंट हेल्प करने के लिए नहीं जा रहे वहां. और फिर कस्टमर के पास में भी तो वही इशू रहता है. उसका भी कोई किसी टू व्हीलर वाले के साथ झगड़ा हुआ है, उसके घर में भी देरी है, उसके घर में भी प्रॉब्लम है, उसको भी सम और अदर मेडिकल इश्यूज है. जो आपको प्रॉब्लम है उसको भी है. वो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल सकता है, पॉसिबिलिटी है. वो प्रोफेशनल है, वो नहीं निकाले, लेकिन उसका लिमिट अगर क्रॉस हो गया है वो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालेगा. लेकिन फिर भी एज अ सेल्स प्रोफेशनल इन एट एनी सर्कमस्टेंसेस you will not be informal or friendly or like customer. चिल्लाएंगे नहीं. Limitation. Very pleasant tone all the time. Very key sales skill. Identifying prospect and convince. सेल्स का सबसे क्रिटिकल जो बोलते हैं ना डिफरेंस है. मैं पेन एरिया सेल्स पर्सन का, कोई भी सेल्स पर्सन, मैं भी आज तक वही डिफिकल्टी फेस करते आया. व्हाट इज आइडेंटिफाइंग प्रॉस्पेक्ट? What is identifying prospect? Of course, वहाँ पर लिखा है, no doubt. फिर भी some different views from Umesh. सारंग, आशीष. क्या लगता है? Potential customer. आजी. Sir, choosing the customer as per our customer range. Identifying prospect is something like those people who are using similar products which you are selling in your market area. उनको identify करना. या those customers who are willing to change out their technology from the technology they are using to pneumatics technology. They also become your prospected customers. Or is someone wants to upgrade their technology Yes. from simple machine to automatic one or something like that? Someone is not happy with existing customer. That also possible. That is also possible. But then he is using a similar product. He is already वो दूसरे के प्रोडक्ट के साथ में हैप्पी नहीं है. It still becomes your prospect. क्योंकि अगर वो फेस्टिवल यूज कर रहे हैं तो इट्स सेल्स पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू गो देयर एंड पिच इन फॉर हिज प्रोडक्ट्स. Whether he is happy or not happy, he is still your prospect. मुझे prospect के बारे में एक बहुत अच्छा टर्म सिखाया, very important. What is the prospect? हम लोग एग्जीबिशन में करेंगे और 6 दिन का एग्जीबिशन था. एक दिन अलाउ किया था कॉलेज स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स को अलाउ किया था. The first half went very good. We were explaining the products to all the students. They were coming and test out. दोपहर में मेरा एग्जीबिशन, वही foolish questions and वही सर ये क्या मिसाइल है क्या, सिलेंडर को मिसाइल. Very common and irritating questions. Although I did not reciprocate my feelings with those students,
but the manager who was sitting behind me, he noticed. उसने कहा मुझे, "Do you know, Shirish? These are your prospects." ये लोग जाके आपका यहाँ पर ब्रांड देखा है उन्होंने, आपके प्रोडक्ट देखे हैं, जब ये प्रोफेशनल करियर में जाएंगे, they are going to be your prospect. Please treat them as your customers. कितना बड़ा कंसेप्ट है। उसके बाद में जिस दिन कॉलेज के स्टूडेंट्स स्टॉल में आने वाले होते, उस दिन मतलब 100% वो स्टॉल पे रहते थे। वो मेरे प्रोस्पेक्ट है। What a big meaning to the word prospect. Wow. You can they can become customers. They are going to be your customer for sure. अगर 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें से 5 लोग तो परचेस में जाएंगे, 5 लोग तो इंजीनियरिंग में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी योर कस्टमर। और उस टाइम पे वो क्या देखेंगे? एक बंदा था शिरीष जोशी, उसने मुझे ये निमैटिक्स का प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। वो ना कुछ रोबोटिक्स करके बैंड है, माइंड मैन करके कुछ बैंड, ये उनके ध्यान में रहेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनको दूसरे न्यूमैटिक्स के स्टॉल पे नहीं आया है। जिसको किसी ने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया है, इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया है। एज अ स्टूडेंट हाउ यूजुअली जो की सेल्स पर्सन रहते हैं, जिस दिन ये स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं ना, उस दिन वो आते नहीं यार, ये हम लोग थक जाते नहीं आते। वो किसी जूनियर पर्सन, प्रोडक्शन के बंदे को वहां पर खड़ी कर देते, या जो हमारी रिसेप्शनिस्ट है उसको खड़ा कर देते। आई एम सॉरी, दैट्स व्हाट द फैक्ट इज। लेकिन उसने मुझे बताया, these are your prospects. ते आपले फ्युचर बायर्स होऊ शकतात. They are your future buyers. There can be 100 potential customers. जैसे आपने बताया कि पेस्टो यूज कर रहा है, एसेंस यूज कर रहा है, ये वो हमका यूज कर रहा है, बट देन हु इज योर प्रॉस्पेक्ट? मैं और एक एक्सपीरियंस उससे पहले का एग्जीबिशन, हम लोग मशीन, आई वाज वर्किंग विद दैट मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और हमारा कोलकाता में एग्जीबिशन है। बाकी के सेल्स पर्सन जितने लोग आते थे ना, सबको अटैक कर देते। ये बंदा मेरे मशीन के पास में आया है, तो इसको थर्मोफॉर्मिंग मशीन परचेस करने में इंटरेस्ट है। ऐसे एग्जीबिशन के लिए हार्डली दिन में 40-50 लोग आते थे, क्योंकि उनको जिनको इंटरेस्ट है ये मशीन में, वही लोग वहां पर आते थे। डेडिकेटेड एग्जीबिशन फॉर थर्मोफॉर्मिंग मशीन। एक बॉम्बे का बंदा था, जोसेफ, ऐसा ये स्टॉल है ना, वो कॉर्नर में जाकर बंदा ऐसा खड़ा है। मैं सर्विस इंजीनियर, मशीन रन कर रहा था वहां पर बैठे, मैंने जाके बंदे को पूछा, बाकी ये सब 4 लोग जो है ना, और कस्टमर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि दे आर बिकमिंग देयर प्रॉस्पेक्ट्स। क्यों वहां से देख के सिर्फ ये कर रहे हैं? जो लेने वाला है ना, उसी को मैं अटैक करूं। और सबसे ज्यादा ऑर्डर बुकिंग वो एग्जीबिशन में वो बंदे ने किया, सबसे ज्यादा ऑर्डर बुकिंग वो बंदे ने किया एग्जीबिशन में। अगर उसके जो कलीग थे, वो 10 कस्टमर को, 10 पर्सन को हैंडल करते थे, ये एक ही बंदे को हैंडल करता था, लेकिन उसको मालूम पड़ता था कौन बंदा लेने वाला है, देख के बॉडी लैंग्वेज। 1994 की बात करूं मैं, उस टाइम पे उसके पास ये स्कीम था। सबसे ज्यादा ऑर्डर बुकिंग किया था बॉस। इंपॉर्टेंट इज चूज योर कस्टमर। हमारा पूना का मार्केट है, हर गली में 3-4 लोग मिलेंगे जो आपको मेडिसिन लेते हैं। हर कोई आपसे लेने वाला है क्या? इट्स वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट to identify who is going to be your customer. वो कैसे करेंगे?
जो कस्टमर को सबसे ज्यादा पेन है, जो कस्टमर को सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी या सम डिफरेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, वो आपका प्रोस्पेक्ट बनेगा। The best way is searching customers who are in need of a solution, product, or if dissatisfied with existing suppliers. That becomes your biggest prospect. अब ये कहां से बनता है? अब कस्टमर मेरे को अंदर ही नहीं आने देता है, आता है हाय हेलो करता है, चाय पिलाता है, निकल जाता है। मालूम कैसे पड़ेगा इसको क्या चाहिए? Your skill is to search such customers. Your skill is to look for these customers. The best source of such information is your friend or colleague working with the competitor. The best source is your friend or your colleague who is working with your competitor. 80% of sales information sharing happens on a tea stall. Ahmedabad का बोले ना? Yes, Ahmedabad having a culture. Which hotel it is? न्यूमेटिक्स का कौन सा होटल है? वो कौन सा है? चौक है वो, वहाँ पे सब जमते हैं शाम को सुट्टा और चाय मारने के लिए। हाँ, इट्स फैक्ट। हाँ, इट्स अ फैक्ट है। एवरी कॉम्पिटिटर। वो एरिया के जितने भी सेल्स वटवा में न्यूमेटिक्स का एक स्टॉल है। हर रोज शाम को वहाँ पर सभी सेल्स लीडर आ जाते हैं। सब जेनेटिक्स स्पेशलिस्ट सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। डेली दिल्ली में है, पूना में है, भोसरी में एक टपरी है, टी ब्लॉक में एक टपरी है। कोई ना कोई मी कोल्हापूरला वहाँ बघितलंय, पर एक मी कोल्हापूरला बघितलंय। चेन्नई ऑल्सो हैविंग कभी आपने ये नोटिस किया था? कभी आपने ये थॉट प्रोसेस दिया था? Isn't it amazing? आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? नहीं तो कंपटीशन का कितना शेयर है, कंपटीशन का बिजनेस कितना है, वो वहाँ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो वहां से ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट कहां पर जा रहा है, ये XYZ कस्टमर को मैं कौन सा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वो वहां पर मिलता है इंफॉर्मेशन, और कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। Even a new company to be constructed. Yes. मैंने आई रिमेम्बर जो ऑटोमोबाइल को सीट बनाते, सीट लियर का प्लांट नासिक में है, और उनको बीइंग द असेंबली स्टेशंस देयर, फॉर्मिंग स्टेशन भी था उनका एक अलग से, लेकिन फॉर्मिंग स्टेशन में न्यूमेटिक्स नहीं लगता है। असेंबली स्टेशन में उनका काफी सारा न्यूमेटिक्स था। वो गन, एयर फिल्टर रेगुलेटर, क्विक रिलीज कपलिंग, PU ट्यूबिंग, फिटिंग, वो उस टाइम पे लेग्रीज का वो ओवरहेड पाइपिंग का वो नया स्कीम आया था उनका, टच एंड गो, वो सब उनको लगे। ये इंफॉर्मेशन मुझे टी स्टॉल पे मिला और वो पूरा ऑर्डर में लिया। आई एम वेरी प्राउड, पूरा ऑर्डर, एयर फिल्टर रेगुलेटर्स, क्विक रिलीज कपलिंग एंड ट्यूबिंग फिटिंग। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्टोर पे जाना, आपको आपके पास का इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना पड़ता है। they are also expecting some information from you. रेसिप्रोकेटिंग एक्शन है। सर मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिला है लेकिन नेगेटिव मिला था। ये कस्टमर के साथ ऐसा पेमेंट टर्म्स ऐसा है, यानी ऐसा मिला था कस्टमर जो कलीग्स थे दूसरे कंपटीटर्स का कस्टमर ऐसा है, जानबूझ के वहां पर रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी मिलती है। नहीं सर, वो राइट था। मैंने भी 2 बार मैंने वो एफर्ट भी लगाया, उसने इंक्वायरी भी दी, ऑर्डर भी दिया था डीलर को, और हम लोगों ने टाइम भी बनाया था कि इसका प्रेशर बूस्टर रेगुलेटर प्रेशर है इसके लिए, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और तब जाके मेरे को, मैं एक बार विजिट करने गया तब एसएमसी का बंदा पूरा सुबह से आके शाम तक वहाँ पे रुका था पेमेंट के लिए, बार बार बोलो, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, उसको इग्नोर ही कर रहा है।
वही प्रोफेसर मिलेगा। वेरी गुड, लेकिन उसके लिए आपको वो इंफॉर्मेशन अगर आपको मैं चाहिए, अभी भी एफर्ट लगा रहा हूँ। ग्रेट, मुझे तो आपको आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, ट्रू इंफॉर्मेशन, मे बी पार्शियल, यू नीड नॉट शेयर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मे बी पार्शियल इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना पड़ेगा। उसको अवेयर करना पड़ेगा आपको। उसको वहां पर कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा। ये एक्सचेंज में ही आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगा। स्टॉक तो इंफॉर्मेशन आपको क्या करना पड़ता है मालूम है इसके लिए? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपके कॉम्पिटिटर में फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। उनको, उनके साथ आपका पर्सनल सोशल इंफॉर्मेशन चैटिंग आपको शेयर करना, एंड यू लर्न ए लॉट ऑफ स्किल्स। वहां पर बैठे बैठे, अरे यार वो दाल का पेमेंट बहुत प्रॉब्लम है, मेरा ना आज बॉस ने बहुत मेरे को पीट दिया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गया दाल का पेमेंट अच्छा नहीं रहा। आज मैं गया था कस्टमर के पास, और कस्टमर ने ना मेरे को ये प्रोडक्ट के बारे में पूछा, कुछ बोला, ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, वो किसी के पास भी नहीं है प्रोडक्ट, लेकिन मैंने उसको सोल्यूशन दिया। ये 2 प्रोडक्ट कंबाइन किया और मैंने उसको सोल्यूशन। आपको क्या मिला? टेक्निकल नॉलेज मिला कि ये क्विक एग्जॉस्ट वॉल आई कैन यूज एज अ ऑर्गेट। वो है ऑर्गेट, तो ढूंढने से नहीं मिलता है कहीं पर यार। ऑर्गेट आपको ढूंढने से कहीं नहीं मिलते हैं, और उसका डिलीवरी भी बहुत लंबा होता है। इसने क्या होता है, आई यूज क्विक एग्जॉस्ट वॉल एज अ ऑर्गेट, वही फंक्शन है, नथिंग, नो डिफरेंस। ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी, वो टी स्टॉक पर मिलेगी। उसके साथ में आपको आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर का भी इंफॉर्मेशन वहीं पर मिलेगा। हाँ ठीक है, प्रोस्पेक्ट इंफॉर्मेशन जो आपको लीस्ट ऑफ कस्टमर है, 100 यहाँ पर मेरे इंडस्ट्रियल एरिया में, अलोकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में कौन से कस्टमर्स है जो न्यूमेटिक्स यूज करते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं पर मिलेगी। बट दैट इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट, दैट इज जस्ट द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु आर यूजिंग न्यूमेटिक्स। आपका प्रोस्पेक्ट वही है जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है, जिसको सर्विस की जरूरत है, या जिसको सॉल्यूशन की जरूरत है। अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू एंटरटेन डेफिनेटली। काय ना कुठलं ऑटोमेशन? मॅकवेल झालं, त्याच्यानंतर नाही. आणि फार्मा झालं. नाही चाकण बोलतात ऑटोमेशन कुठलं हाउस? फ्रंटियर पाटिल ऑटोमेशन। पाटिल ऑटोमेशन। PAPL। ये बंदे ने कितना चक्कर मारा रहेगा वहां पर। इसके पहले वो भी था चैतन्य। येस। त्याच्यानंतर भरपूर सारे तुम्ही सांगितलं जसं कुठे काय यूज होतं, कोणाचं पेमेंट सर्व मोठमोठ्यामध्ये तिथे यूज होतं, त्याच्यानंतर मॅकवेल, त्याच्यानंतर अनिश मामाचं पेमेंटबद्दल मी तुम्हाला विचारलं होतं. पाटिल ऑटोमेशन में अगर प्रोडक्ट पेनिट्रेशन करना है तो आपको टी स्टॉल पे जाके बैठ के उसका इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ शेयर करना पड़ेगा। तब पाटिल ऑटोमेशन में उसको लगने वाला प्रोडक्ट, सर्विस, नीड, रिक्वायरमेंट मालूम पड़ेगा। बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन 80% of the sales information sharing happens on a tea stall. Are you a part of such group of sales professionals? That's the question for yourself. अगर आपके एरिया में ऐसा सेल्स ग्रुप नहीं है तो उसको क्रिएट करने की जिम्मेदारी भी है। और क्या इंफॉर्मेशन है जो who can become my prospect? Now I have briefed कि prospect मतलब क्या है, ये आपको सबको मालूम है। तो what are the other sources of such information? और एंड यूजर्स, Yes, good. न्यू कस्टमर का कोई नया प्लांट आने वाला है तो तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा लेकिन? वो वही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? सोशल मीडिया, डीलर भी शेयर करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन। Social अरे भैया media। वो एक प्लांट आ रहा है, मेरा ये मैं कुछ न्यूमेटिक टूल्स का एजेंट हूँ, वो वहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट आया है, जाके देख लो यार वहाँ पर कुछ सिलेंडर या एयर फिल्टर रेगुलेटर लगने वाले तो देखो। डीलर से मिलता है। सर इंजीनियर्स जो कंपनी के अंदर डिजाइन इंजीनियर्स जो
उनसे लेकिन उससे काफी उनसे अच्छी आपको होती फ्रेंडशिप होनी चाहिए। हाँ बट सर कई बार कस्टमर भी कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन देते हैं। देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब Competitor। बीइंग एक कंपनी का है, हम सारा इंफॉर्मेशन कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। कंपनी का और एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं XYZ कंपनी में जा रहा हूँ जो कि पैकेजिंग मशीन बनाती है, तो वो उसके कॉम्पिटिटर पैकेजिंग मशीन में उसका जो कॉम्पिटिटर है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, बिल्कुल। है ना। वो बोलेगा यार वो ना हेरा यूज करते हैं मैडम, उसके मशीन में ना ये साइड पे प्रॉब्लम आया है। इंफॉर्मेशन आ गया आपको है। आपका जो कस्टमर है he will become second source of your information। उसके बातों बातों में निकल जाएगा, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा उसको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है सर। मिलती है, बिल्कुल मिलती है। बहुत सारे हाउ यू अप्रोच टू द इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन तो लेना है, एवरी डे लेना है। कस्टमर भी बोलते हैं कि उसका जो कॉम्पिटिटर है उसके पास ऑर्डर है, वो बोलते हैं उसके पास ऑर्डर है, तो आप जाके देखो भाई यार मेरे को हमने ये नहीं 10 मशीन का ऑर्डर लूज कर दिया है यार, वो पड़ोस वाले ने ले लिया सर अभी 4 है, और अभी हमारा सैलरी का इशू हो जाए, वो कुछ उसका खुद का रोना कुछ अलग रहेगा, लेकिन वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। हमारे काम तो इन्फॉर्मेशन लेना। हमारा काम है इंफॉर्मेशन लेना। हाउ केयरफुली वी लिसन टू द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर का रिक्वायरमेंट हमने पहले देखा था कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट हमको वेरी केयरफुली लिसन करना है, उसके साथ में ये इंफॉर्मेशन दैट बिकम्स योर प्रॉस्पेक्ट। 4 दिन पहले ऐसे ही हुआ, ऑर्डर अपने को नहीं आया, बट ये पता चला कि ऑर्डर फरीदाबाद में नहीं गया बट पुणे में आया। कस्टमर ने खुद बताया उसको नहीं आया, उसको नहीं उसने आया। बताया यहाँ पे आया। वो पुणे में आया। I was about to come to that point, क्रॉस टेरिटरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर किया है? हाँ। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें हमने वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसमें हमने टारगेट दिया था हर सेल्स पर्सन कि साल में आपको 10 क्रॉस टेरिटरी इंफॉर्मेशन उसमें डालना है। वेरी मैं पुणे में अगर बैठा हूँ बीइंग अ कलीग ऑफ यूअर्स, और मुझे 10 लीड अगर मिल जाता है थ्रू माई टीम, नथिंग ग्रेटर देन दैट, नथिंग बेटर देन दैट। क्रॉस टेरिटरी इंफॉर्मेशन और क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है? हमने कस्टमर का देखा, हमारे जो टी स्टॉल की इंफॉर्मेशन है वो एक देखा, और क्या इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और क्या रहेगा? सोशल मीडिया। नए कस्टमर के पास जा रहे हैं तो पहले तो शुरुआत यहाँ से होता है कि वो वॉचमैन जो होता है कभी कभी बहुत नहीं मिलता। सबसे पहले जो वॉचमैन का एंट्री हो गया ना, उसके ऊपर जाके लेकिन अभी क्या हुआ है, हम लोग भी करते हैं, जो विजिटर एंट्री है ना, अपना नाम भी लिखते हैं हम लोग, कंपनी का नाम भी मेंशन नहीं करते, तो कॉम्प्यूटर को पता चलता है कि कॉम्प्यूटर का पर्सन कब यहाँ विजिट करके गया है, मेंशन नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि पता चलता है कि अभी हमने देखा था यार जेनेटिक्स से आया था, हम फिर उसी माइंड से रहते हैं जेनेटिक्स वाला भी आया था, क्या पता चला था, बात देखा उसमें, तो वो बोलते हैं यार एंट्री मत करो, हम लोग हाँ जी बिल्कुल। अरे लेकिन ये सेल्स के लिए भाई आपको ये इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक्स वाला आपके यहाँ पर क्या है, तो इसको क्या सोल्यूशन हमने देना है। मैंने जो एक खिचड़ी गेट के ऊपर, गेट पे आने से पहले जो एक खिचड़ी पकाया था मैंने, वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया वहाँ पर, Immediately चेंज होना चाहिए वो। Yes। सेल्स स्पीच वहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए। मैं जेनेटिक्स का नाम देखा है, मैं जेनेटिक्स का नाम वहाँ पर मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पर अभी दाल में क्या डालना है, क्या ऐड करना है, तभी मेरा खिचड़ी अच्छा बनेगा, वो कस्टमर को पसंद आएगा। That's sales skills। सही बात है। और एक इंफॉर्मेशन होता है जो कि एंड यूजर से आता है, जैसे कि आईटीसी विल बाय एटलीस्ट 50 machines per year for their packing। आईटीसी टोबैको पैकिंग एंड टी पैकिंग, ये इनका मेजर बिजनेस है, और कॉफी मटीरियल। इसके साथ में आईटीसी के 1000 अदर प्रोडक्ट्स, मेजर इज टोबैको एंड टी। तो उनका जो डिजाइन टीम है या उनका जो
परचेस टीम आईटीसी का, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। 20 मशीन मैंने नासिक में लाबेला मशीनरी को दिया है। You can suggest some suppliers to them also. वहां पर आपको अप्रूवल मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स पर्सन स्टक्स अप, आपने सब कुछ बेसिक लेवल का ग्राउंड वर्क करके रखा है। कस्टमर आके बोलता है आपका नाम नहीं है अप्रूव लिस्ट में, मैं आईटीसी को दे रहा हूँ, आईटीसी के लिस्ट में एसएमसी पेस्टो ये वो मेक है, आपका नाम नहीं। क्या करता हूँ? Practical difficulty, absolutely practical difficulty, especially in demands. The Indian market is dominated by Presto SMC. What will you do with such information? अगर आपको ऐसी डिफिकल्टी आती है तो आप क्या करेंगे? एक्चुअली ये क्वेश्चन है आने वाला था अभी आपके, जी यही क्वेश्चन था। अरे फिर आपको अभी हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ये बिल्कुल आएगा। बार सेम वर्ड ही मिलता है अच्छा। अपने को। मारुति में जाएंगे, गाँव मानेसर वाले एरिया में वहाँ पर एसएमसी बोलेंगे, वो बोलते हैं एसएमसी वो अप्रूवल है। आप इस बॉम्ब में ऑब्लिक्स माइंड में लिखा लो, वी कैन प्रोसेस इट। Sir, then we have to cater the end users first. Maintenance team. Through maintenance team ही आप वहाँ पे जा सकते हो end user पे। जैसे अगर दो अप्रोच है, जैसे आपने बताया, ठीक बताया। एक तो आपको वहां पर उनके प्लांट में, समझो ये टाटा मोटर्स का कोई प्रोजेक्ट है, तो टाटा मोटर्स के प्लांट के अंदर आपको आपके प्रोडक्ट का कुछ इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा फर्स्ट, जिसकी वजह से कि उसका परफॉर्मेंस देख के कस्टमर विल एड योर नेम ऑन हिज ओन इन हिज मेक ऑफ लिस्ट। I will share my experience with you. When I joined Rotex, No, you can continue. sure, you can do this. सब लोग पेट अंदर ले लो। पॉसिबल नहीं है ना अभी पॉसिबल नहीं, अब नहीं, अभी लंच हो गया। You guys can continue. I mean, Yeah, sure. So the second way of handling this situation is, अगर टाटा मोटर्स में मेरा अप्रूवल नहीं है, लेकिन फिर मैं दिल्ली के बंदे को पूछूंगा भैया तेरे पास मारुति का कुछ परचेस ऑर्डर्स है, वहाँ पर मैं जाऊँगा इंदौर में, तेरे पास स्वराज का कुछ ऑर्डर्स है, मैं और चेन्नई में जाऊँगा, वहाँ पर जो 3-4 ऑटोमोबाइल की कंपनी, वहाँ से कुछ रेफरेंस निकालूंगा। आई विल प्रिपेयर अ रेफरेंस लिस्ट, जो मैं जाके प्रेजेंट करूँगा। देखो भैया ये आपका मशीन वेल्डिंग इक्विपमेंट है, जो SPM है, उसमें इसी एप्लीकेशन के लिए ये मेरा प्रोडक्ट लगा हुआ है। देयर आर 100 नंबर ऑफ सिलेंडर्स, उसमें से 40 सिलेंडर मैन के हैं। कोई एक रेफरेंस तो आएगा ही आएगा, किसी ना किसी बंदे ने अच्छा काम किया ही रहेगा, डेफिनेटली 100%। आई विल टेल यू माई स्टोरी। आई वाज अबाउट टू टेल यू, जब मैं रोटेक्स में ज्वाइन हुआ था, रोटेक्स का न्यूमैटिक्स का टर्नओवर वाज समवेयर अराउंड 6 to 8 crores, 5 to 6 crores. Whereas रोटेक्स का सॉलिड वर्क का बिजनेस बहुत अच्छा है। 2 different divisions, 2 different manufacturing units, 2 different set of managements. मैं गया फॉर एग्जाम्पल थर्मैक्स में, उनको कहा कि हम लोग न्यूमैटिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पावर सिलेंडर बनाते हैं। उन्होंने कहा अरे भैया अल्ट्राटेक में देख, नहीं है तेरा नाम, DHL में देख, NTPC में देख, XYZ अंबुजा सब में देख ले, कहीं पर भी तेरा नाम नहीं है भैया। ये जो 2-3 रेफरेंस परचेस ऑर्डर लेके आया है मेरे पास में, उसका मेरे को कोई मतलब नहीं, ये लिस्ट में तेरा नाम डाल के लेके आ, नहीं तो उनके पास तेरा नाम अप्रूव है क्या देख ले, मैं यूज करूँगा।
products. They are handling various different sets of customers. उनके मेक लिस्ट में कहीं ना कहीं पर लूना नाम रहेगा, वेरी पे रहेगा, आपका अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में कहीं पर नाम रहेगा। हमने क्या किया था, रोटेक्स का सॉलिनाइड वर्क का रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट अप्रूवल वाज एट एवरी प्लेस एक्सेप्ट एनटीपीसी वो टाइम, एवरी प्लेस। ठीक है सर, अप्रूवल है ना, रोटेक्स का नाम है सर उनके वेंडर लिस्ट में। उसको क्या चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको मेरे से प्रोडक्ट लेना है, डेफिनेटली लेना है, इज वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन उसको बाइंडिंग क्या कर रहा है, उसका इंजीनियरिंग बोल रहा है, उसका प्रोजेक्ट का टीम बोल रहा है कि नहीं भैया ये मेक लिस्ट है, इसी में से यूज करो। अंबुजा सीमेंट के अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट पे रोटेक्स का नाम है, इसके लिए है वो छोड़ दो, कौन से प्रोडक्ट के लिए वो छोड़ दो, वो है सॉलिड वर्क के लिए। लेकिन अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में क्या आता है, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट न्यूमैटिक्स रोटेक्स। अभी सेल्स पर्सन तो इतना होशियार तो रहता ही है बॉस कि ही विल मेक अ मिसयूज फॉर गुड पर्पस टू जनरेट सेल्स। नहीं तो करना ही पड़ता है। ऐसे पावर सिलेंडर के अप्रूवल्स, I did nothing wrong. I wanted to generate business through ethical sense, ethical way. रोटेक्स का नाम was already there. लूना टेक्नोलॉजी, लूना बेरिंग, कितने सारे प्रोडक्ट्स, कहीं ना कहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन 100% रहेगा बस, हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा ग्रुप, कितना टर्नओवर है ग्रुप का? क्रॉस 200। That's huge. कहीं ना कहीं तो आपको उसका रेफरेंस मिल ही जाएगा। हम उसको पीटीआर बोलते हैं, फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। 100% मिलेगा, 100%, नो डाउट। किसी ना किसी बंदे ने तो अच्छा काम किया ही रहेगा। कितने साल हो गए ये कंपनी? 35 years। 35 years में कोई तो बंदा रहे जिसने अच्छा काम किया रहेगा। Not directly, but via सोर्स यार। अंबुजा सीमेंट कभी भी रोटेक्स का सॉलिड वर्क डायरेक्टली परचेस नहीं करता है। इट गोज थ्रू, ऑल इट गोज थ्रू द पैकेज हैंडलर्स। लेकिन 6-7 साल के बाद में रोटेक्स का न्यूमैटिक्स डिवीजन का टर्नओवर 30 करोड़ और पावर सिलेंडर के सेक्टर में रोटेक्स का शेयर 60% है। Yes। Which was mere 10%, 12%, mere, उससे भी ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे, आई विल कम डाउन टू दैट स्टोरी अगेन, लेकिन उस टाइम पे हम लोग फैक्ट्री ऑटोमेशन के प्रोडक्ट ज्यादा बेचते थे, प्रोसेस ऑटोमेशन में कुछ नहीं करते। वेयर सिलेंडर्स, सॉलिड वॉल्स, वो कॉम्पैक्ट सिलेंडर्स, उसका मिनीचर सिलेंडर्स। आई एम शेयरिंग, थैंक यू। There are n number of ways how you can create your prospect. There are n number of ways. आशीष, एक पानी की बॉटल में दीजिए। Sorry. It's very important to identify your prospect. It's very critical. आप लोग 100 कस्टमर के ऊपर जितना मेहनत करेंगे उससे 1% मेहनत में आपको ज्यादा बिजनेस मिलेगा। If you act intelligently, proactively, आपको सीगल बोलते, सीगल ऊपर से देखते हैं मेरा मछली कहाँ है नीचे पानी। There will be thousands of those fishes in that sea water.
थाउजेंड्स ऑफ, लेकिन उसको वही चाहिए जो कि उसके ग्रिप में हो, उसके ग्रिप में बैठ जाए। ज्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, ग्रिप से निकल जाएगा, ग्रिप लिमिटेड है ना उसका, वही साइज, वही वेट, वही टाइप, दूसरा टाइप का भी वो नहीं खाएगा फिश। वेरी क्रिटिकल, कितना क्रिटिकल जॉब है वो, एवरी डे करता है। हाँ, मैं यही करता यही सेल्स पर्सन का जॉब है। आपको आपका फिश दिखना चाहिए, आपका फिश कौन सा है वो आपको मालूम होना चाहिए, यूर प्रॉस्पेक्ट। और फिर एक बार वो प्रॉस्पेक्ट मिल जाता है तो उसके ऊपर हावी हो जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, because you are going to fulfill his requirement, his need, his problem, his needs, his pain areas. उसके आगे आता है, आपने प्रॉस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको कन्विंस करना है। पॉसिबिलिटी कि उसको आपका ब्रांड मालूम नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपको जानता नहीं, पॉसिबिलिटी है कि उसको न्यूमेटिक्स का पी भी मालूम नहीं है, लेकिन उसको एप्लीकेशन आने वाला है। हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प, हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस। Persuasion is the heart of sales. Convincing. Persuasion is nothing but pursue, push, pursue, convince करना। Persuasion is the heart of sales. A persuasive salesperson will strive to guide the customer to arrive at their own purchase decisions instead of just hoping a deal. आपने prospect ढूंढ लिया है, उसका नीड क्या है वो आपको मालूम पड़ गया है, उसने आपको इंक्वायरी दे दिया है और आपने कोटेशन भी दे दिया। आगे जाके आपको क्या करना है? Persuasive salesperson will strive. What is strive? I will struggle. I will fight till the end. I will not drink my water if I don't get this order, if I don't guide the person. That's strive. A persuasive salesperson will strive to guide the customer to arrive at their own purchase decision. Purchase decision कौन लेने वाला है? आपका कस्टमर लेने वाला है purchase decision. आप उसको हेल्प कीजिए to take his decisions. Most of the salesperson, एक बार मैंने ऑफर दे दिया, मैंने डिस्काउंट दे दिया, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल कर दिया, तो मेरा काम हो गया, ऐसा मानता हूँ। Most of it, I see. I want to many sales teams. सर मैंने डिस्काउंट दे दिया था, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल कर दिया था, लेकिन मेरे को ऑर्डर नहीं आया। आई वॉज अवेलेबल, मैं सबसे लोएस्ट में, फिर भी मुझे नहीं ऑर्डर आया। ये मेरा एज अ सेल्स पर्सन, ये मेरा क्या बोलते हैं इंप्रेशन है कि मैं L1 था, मैं T1 था। व्हाट इज T1? टेक्निकली आई वॉज नंबर 1, ये मेरा इंप्रेशन है। लेकिन वहां पर क्या किया, दूसरे बंदे ने जाके he made customer to change his decision. He's a better salesperson. I've seen people taking orders at much higher prices. You, everyone. I've seen every day restaurant agency persons are taking orders at much more prices than your prices. Yes, sir. Isn't it? क्यों करते हैं? सिर्फ ब्रांड है इसलिए? No. वो उसको कंफर्ट देता है। That person gives them the comfort. Person gives them the comfort. So you will help the customer to arrive at their own purchase decision instead of just hoping for a deal. Most of the salesperson, मैंने सब कुछ कर दिया है, इसलिए ऑर्डर दिला दे, he is hoping for the deal. मुझे ऑर्डर नहीं आया है, वहां पर और भी 4 सीगल मैंने देखे हैं, वो फिश को पटक जाएंगे, पकड़ के लेके जाएंगे।
तो मुझे आई शुड बी द पर्सन, आई विल बी द पर्सन विल कैच दैट फिश. You have to be aggressive. You have to be aggressive. You have to be always positive and not hopeful. Hopes is sometimes becomes negative. मुझे ये ऑर्डर आएगा, ये होप मुझे है, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं किया. कस्टमर ने बोला था ये ऑर्डर कल शाम तक तुझे मिल जाएगा, ऑर्डर दूसरा कोई लेके गया. 2 घंटे पहले लेके गए. Hope is absolutely positive word when it comes in sense of real life or social life. Lekin sales it can become sometimes a negative term if you do not strive till the end. आप वो डील को जब तक एंड में नहीं लेके जाते हैं, आपने क्या किया है, प्रॉस्पेक्ट ढूंढा, उसका नीड्स आइडेंटिफाई किया, उसको सॉल्यूशन दिया, उसके बाद में उसको ऑफर दिया, आपने उसकी इंजीनियरिंग के साथ में डिस्कशन किया, उसके मशीन में जाके उसको आपने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे होने वाला है, आपने आपका जो बैकबोन है इंजीनियरिंग, उनसे कंसल्टेशन किया, उनके साथ में टीम्स का मीटिंग लगा दिया. इतना सब करने के बाद में जब आप फाइनल सॉल्यूशन कस्टमर को देते हैं, कस्टमर उसको कॉपी करता है, कॉम्पिटिटर को दे देता है और कॉम्पिटिटर को बोलता है कोट कर. होता है, एवरीडे लाइफ में होता है. तो आपको एंड रिजल्ट तक उसको लेके जाना है. एंड देयर ओन परचेज डिसीजंस एंड जस्ट नॉट जस्ट होप फॉर द डील. Preparing. What are the points then to bring that customer to purchase decision? Before every meeting with prospective customer, we better do a homework and come prepared. We have to know what we are selling, understand why someone will want it, and identify who are the target customers. How can we tailor the one size fits all sales pitch from most companies to fit different clients. Again, very important, जो मैंने sales pitch के बारे में बताया. You may have to alter your sales pitch depending on the customer. करना पड़ता है. ये sales pitch, ये चीजें आप जब उसको utilize करना शुरू करेंगे, use करना शुरू करेंगे. How many of you have done some kind of presentation, PPT? Okay, great, good. Wow. So almost everyone. Almost everyone done. Almost everyone. मैंने 6 months में 21 presentations लिए, product presentations, typical standard product presentation. लेकिन मेरा अगर आप लैपटॉप देखेंगे तो आपको वो 21 प्रेजेंटेशंस नाम के साथ वहां पर मिलेगा, क्योंकि मुझे हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट नीड्स के हिसाब से उसमें कुछ प्रोडक्ट घटाने पड़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, या कुछ स्लाइड्स मुझे हाइड करनी पड़ती है, कुछ स्लाइड्स मुझे हाईलाइट करनी पड़ती है. तो मेरा वहां पर कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज करना पड़ता है. बट ऑल ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट. उसी हिसाब से मुझे मेरा सेल्स स्पीच में चेंज करने की जरूरत पड़ती है. उसके साथ में आई शुड नो व्हाट प्रोडक्ट आई एम सेलिंग. व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट प्रोडक्ट आई एम सेलिंग? यार मैं तो सिलेंडर बेच रहा हूँ, और क्या बेच रहा हूँ मैं? मेरा कॉम्पिटिटर भी तो वही बेच रहा है. ऐसा नहीं है. मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं कंसेप्ट बेच रहा हूँ. आई एम नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट. मेरे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है वो मुझे बेचना है. बेचना है मतलब क्या करना है? मैंने कस्टमर को तो बता दिया, भैया मेरा सिलेंडर के अंदर जो सील्स है ना वो गोल्डन का है. पता दिया ना मैंने कस्टमर को. कस्टमर के पास में जब मेरा कलीग जाएगा जो कंप्यूटर में बैठा है, तो बोले क्या गोल्ड लेके बैठे, वो गोल्ड से थोड़ी काम चलने वाला है, उसमें तो रबर का सील चाहिए. क्या है ना आपका ऑर्डर?
आपको ये क्या करना पड़ता है, तो आपने जो प्रोडक्ट या कंसेप्ट उसको सेल किया है, वो कंसेप्ट उसके डिजाइन में लेके आना पड़ता है, उसके स्पेसिफिकेशन में आना लेके आना पड़ता है। एक था 3 लोग डिजाइन, ऐसे कुछ नहीं करा था, सेल्स। Sometimes you have to again twist the things to generate sales. 3 लोग डिजाइन, सेल्स में सबके सील सेम होते हैं, बी सील यू सील वो इंडिया के ही रहते सब, है ना। हमारे सील में डिफरेंस है, लो फ्रिक्शन सेल्स। उतना डाल दो ना, कॉम्पिटिटर वाला का बंदा डर जाएगा आपको, मेरा सिलेंडर लो फ्रिक्शन है कि नहीं, टेस्ट वाला भी नहीं आपको कमिटमेंट देगा, मैं लिख के देता हूं। आपका प्रोडक्ट का एक फीचर आप स्पेसिफिकेशन में लेके आइए, दैट्स व्हाट आई मीन बाय वी हैव टू नो व्हाट वी आर सेलिंग, अंडरस्टैंड व्हाई समवन विल वांट इट। लो फ्रिक्शन सील क्यों चाहिए, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में उसके क्या बेनिफिट हो, आपका सिलेंडर का लाइफ बढ़ेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा मशीन का, जो अभी आप 100 साइकिल्स पर मिनट में चला रहे हैं तो 120 में निकल जाएगा। कुछ ना कुछ आपको एडवांटेज बताना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट का अगर आप फीचर बता रहे हैं तो उसके साथ में उसके एप्लीकेशन में उसका क्या एडवांटेज होगा, ये भाई आपको बताना। तो आपको ये फर्स्ट सेंटेंस कि आपके प्रोडक्ट में और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये आपको डिसाइड करना, तभी आप आपका प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। हाउ वी कैन टेलर द वन साइज फिट्स ऑल सेल्स पिच, वो सेल्स पिच के बारे में बात किया। एनालाइज द लीड्स, ट्राइंग टू अटेंड एवरी लीड अवेलेबल इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम। वेरी वैल्यूएबल, ट्राइंग टू अटेंड एवरी लीड। जो चाय के ठेले पे मुझे इंफॉर्मेशन मिला है वो 100% अगर मैं यूटिलाइज करने जाऊंगा, आई विल बी वेस्टिंग माई टाइम। आई शुड नो हु इज माई कस्टमर। जैसे मैंने वो जोसेफ का एग्जांपल दिया था, एक कॉर्नर में खड़ा रहकर खाली ऑब्जर्वेशन कर रहा है बंदा और सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। उसको परफेक्टली मालूम है मेरा पिच कब आने वाला है। To avoid irrelevant leads, we have to know our ideal client criteria upfront. है ना? मेरा प्रोडक्ट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मेरे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, अगर ये 4 प्रोडक्ट का मैं कॉम्बिनेशन करता हूं तो कस्टमर को बेनिफिट होता है। इट विल बी बेनिफिशियल ओवर एसएमसी, फेस्टो, याओ टाओ और पड़ा। We have to know our ideal client criteria upfront. A good salesperson is able to determine if the potential client is good fit for a company or not. We also don't want to burn a bridge. Very important, very critical. We also don't want to burn a bridge just because the lead is not good fit for our business right now. क्या कहना है? मैंने एक कस्टमर को मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट कस्टमर नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो कस्टमर की मैं कस्टमर की तरफ में पीठ टिका के निकल जाऊंगा? नहीं, कभी भी नहीं। That's what I mean here. आज नहीं तो कल वो हमारा बिल्कुल 100%. We also don't want to burn a bridge. जो जाने का, वो कस्टमर की तरफ जाने का जो रास्ता है, I won't burn it just because the lead is not good enough for me right now. Always make it clear that we are always ready to work together in future and revisit their business in 6 months. मैंने 6 months डाल दिया, but that period, some period, मुझे उसके पास, वो कस्टमर के पास में फिर से जाना ही है। अभी आज मेरे काम का नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो मेरे काम का कस्टमर रहने वाला है। कस्टमर का फोन आता है, यार तुम तो बिजनेस देता नहीं, क्या कि तुम मेरे को कॉल कर रहे हो?
Never use such words. That's what I mean by burn the bridge. You're burning the bridge. हाँ sir. आप जब whenever you decide that you want a particular product and available for your services, isn't it sugar coating, good pitching, and delivering my message? I'm delivering my message in a positive way. मेरे को ऑर्डर तो देता नहीं, क्या के लिए मेरे से कोटेशन नहीं करेगा, यही मैं उसको बताऊंगा कस्टमर को, बट शुगर कोटिंग एंड विद अ क्लियर मैसेज. हाँ जी, हर कस्टमर बोलता है, मुझे तो हर कस्टमर बोलता है. वो सेल्स वाले के हाथ में वो होना ही चाहिए. कस्टमर आपको अगर बोलेगा कि मुझे फाइनल कोटेशन दे दो, तो उसके पास से सबसे पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल कर लो, क्वांटिटी फाइनल कर लो. उसको बोले कि आपका फाइनल फॉर्म विद क्वांटिटी एंड यूर टर्म्स एंड कंडीशन वो फाइनल कर लो. हम लोग हमेशा एक मार्जिन हाथ में रख के क्यों चलते हैं? हमको मालूम है कि अगर मैं एक पीस कस्टमर को बेच रहा हूँ तो मेरा प्राइस अलग रहेगा, अगर मैं 100 पीस बेच रहा हूँ तो मेरा प्राइस अलग रहेगा. ये उसके पीछे हमारा कुछ इकोनॉमिक्स रहता है. ओके, उसके साथ साथ हम लोग कुछ मार्जिन हमारे हाथ में भी रखते हैं, क्योंकि कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलवेज मेरे जैसे मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलने वाले हैं. तो मुझे जो कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन में लॉसेस होने वाले हैं, जैसे कि मैं 30 डेज क्रेडिट दे रहा हूँ, फ्रेट इंक्लूड कर रहा हूँ या P&F में इंक्लूड कर रहा हूँ, मेरे बेसिक प्राइस में अगर मैं उसको या उसको मैं P&F मिल दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट में खुद करके दे रहा हूँ, तो मुझे ये जो कमर्शियल सेटबैक्स आने वाले हैं वो मैं मेरे बेसिक प्राइस में मैं कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर पाऊंगा. इसलिए हम लोग मार्जिन रखते हैं. अदरवाइज अगर मुझे कोई लिख के देगा ना, भैया ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, तेरे को 38 डे पे पेमेंट आ जाएगा, तू मेरे को ट्रांसपोर्ट में डाल दे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैं पे कर दूंगा, मेरा 100 क्वांटिटी रहेगा. क्या प्रॉब्लम है फिर उसको जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो देने में? हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अगर मेरा प्राइस 100 रुपीज है तो हम लोग बिफोर प्रिपेयरिंग माय कोटेशन मैं ये फिगर दिमाग में ले लेता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं ये बंदे को 90 रुपीज में देने के लिए तैयार हूँ. हर एक बंदे को, कोई भी जहाँ जो भी कोई कस्टमर को ऑफर सबमिट करता है तो उसके बैक ऑफ हिज माइंड ही नोज कि अगर मैंने 100 रुपीज कोट किया है तो ये प्रोडक्ट मैं वो बंदे को 90 रुपीज में देने के लिए तैयार हूँ. 10 रुपए की हम लोग मार्जिन रखते हैं फॉर नेगोशिएशन एज वेल एज फॉर लॉसेस इन कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस. अगर कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस हमारा फाइनल हो जाता है, क्वांटिटी फाइनल हो जाता है, व्हाई नॉट गिव योर बेस्ट प्राइस? आपका उस टाइम आगे आएगा वो पॉइंट, निगोशिएशन स्किल्स बोलते हैं. आप पहले टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करो. सर आपका जो फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन है वो मुझे दे दो, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है मुझे तो मैं आपको अपफ्रंट बता दूंगा, हम लोग वो पहले रिजॉल्व कर लेते हैं. आई विल इंश्योर, आई एश्योर यू कि मेरा फाइनल प्राइस आपको मिल जाएगा. उसके बाद में मैं आपको 1 रुपया कम करके नहीं दूंगा एंड देन यू आर फ्री टू टेक योर हिडन टारगेट प्राइसेस. अगर आपको जो जो चीज के लिए आपने वो मार्जिन रखा है, निगोशिएशन मार्जिन, वो अगर पहले क्लियर हो जाता है, व्हाई नॉट गिविंग द बेस्ट प्राइस? वही मतलब कोई जो होता है ना वो डिस्क्लोज भी नहीं करते टारगेट प्राइसेस, तभी कैसा ऐसा है. then you know what your competitor is going to offer. वो आपको मालूम होता है. डेफिनेटली if I'm in this market then I know what price my competitor is going to offer. हाँ, उसको इतना बता सकते हैं कि A, B, C, D अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स है तो मेरे ये रेट्स आपको अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन
उसके नीचे के अगर 4 कॉम्पिटिटर्स है तो यू बेटर डोंट टेक अ पोजीशन। फेयर इनफ, उसको भी बोलेगा हाँ यार डन, फेयर इनफ, बंदा ट्रांसपेरेंट है। आपको वो प्राइस लेवल सब जगह पे बाय थंब रूल आपको मालूम है, तो आपको वो 4 लोग अगर दिखते तो आपको क्या प्राइस दे रहे वो आपको मालूम है, और नीचे के 4 लोग अगर दिख रहे आपको वहां पर तो आपको मालूम है कि ऑर्डर आपको नहीं आने वाला है। हाँ, उसके हिसाब से फिर आप आपका प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जेनेटिक्स का सॉलिड वॉल, ऑल्दो द कस्टमर कैन गेट इट इन 1200 bucks, ओके, लेकिन उसका स्विचिंग स्पीड, उसका जो कोई भी n नंबर ऑफ पैरामीटर्स, फ्लो, प्रेशर, ये वो अगर मैच करना है तो मुझे ये XYZ हाइयर सॉलिड वॉल देखिए नहीं चलेगा, मुझे ABC वाला जो मॉडल है मेरा वो मुझे मेरे कस्टमर को कोट करना चाहिए। आपका क्या कंपटीशन है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। आपके पास रेंज है, आपके पास सिलेक्शन के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो आपको आपके बास्केट में कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं तो आप डिसाइड करना है। कस्टमर को नहीं डिसाइड करेगा, कस्टमर को तो आपकी प्रोडक्ट पूरे मालूम नहीं। Communicating with prospect and convincing him. Every salesperson must acquire finely tuned communication skills to pick. Of course, we have discussed communication skills in training. We want to talk in the customer's language and refocus the pitch on the needs instead of only talking about their companies and products. ये एक important point है जो मैंने जानबूझ के यहाँ पर डाला है और ऊपर नहीं डाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी शुड फोकस ऑन आवर प्रोडक्ट्स, कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट। उसके साथ में वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन उसका कंपनी, मेरा कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा ही नहीं, मेरा नाम मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा ना कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में। कस्टमर का कुछ नीड है, उसका कुछ रिक्वायरमेंट है, उसका कुछ पेन एरिया है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम सॉल्यूशन देंगे, उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। A sloppy delivery is not going to convince anyone. What is sloppy delivery? Sloppy delivery of your communication. Sloppy delivery. I'm not confident. I'm delivering some speech to you and having a discussion with this person, this guy, and I'm not very good in communication, not in language, and not in even in grammar. That becomes sloppy. मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस बना रहा हूँ। बेटर टू टॉक इन लोकल लैंग्वेज और बेटर टू टॉक इन योर ओन कंफर्ट लैंग्वेज। This happens especially in the north, especially in Tamil Nadu, Kerala and Tamil Nadu. Unfortunately, I'm sorry, and do not want to hurt anyone's sentiments, but then because these people are very specific, because they are highly learned. These people are highly learned, and they want to use proper language and proper grammar. So they are very choosy about the language you use, the way in which you use the language. If I start mixing those grammar mistakes, I'm mixing the past tense with present tense and future tense. South Indian people will be not happy with it, believe me, because they are highly learned. They are much ahead in terms of their culture than Indians. That's the fact of the
being this back for many years now. They don't want to learn Hindi because they believe their own language is strong enough to communicate. Don't take it otherwise. No. Maybe true. And then this comes when they spread out of their region, but the nature of their upbringing, they keep traveling with them. This happens in Gujarat. They don't prefer English. They are very comfortable in Gujarati or Hindi. They are very comfortable. It's not that they don't know English. It's not like that. But they like to chat too much. Yes. They like to speak too much. Believe me. वो गुजराती अगर बैठे ना, वो शांत बैठेंगे ही नहीं. That's a good thing. You are maintaining very healthy personal relationships. You are very outspoken. Mind will be clear. Minds will be very clear. Business में देखिए, कोई आपको दूसरा कमेंट करने के लिए गुजराती. They are very outspoken. The thoughts in their minds are very clear when it comes to business. So they keep on talking. They keep extending their thought process. मैं अगर किसी के साथ में गप्पे मारूं, if I'm chatting with someone else, you and me are chatting, what we are doing? We are exchanging thoughts. मैं अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर मेरे में कुछ गप्पे मारूं, nonsense things, maybe, but still, it is exchange of thoughts. That's what happens in the So, a sloppy delivery is not going to convince anyone. The facts which are true in Tamil Nadu or in Kerala or in Bangalore or in Gujarat will be true in some or other way in other areas and regions also. जो बात जिस तरह से हम लोग बात नासिक में करते हैं, उस तरह से बात हम पूना में नहीं कर सकते. कोल्हापुर का बंदा आके अगर पूना में बात करेगा, he won't be accepted. उसका टोन अलग है, उसका डिलीवरी अलग है, बात करने का डिलीवरी जो अलग है. अब जहाँ जा रहे हो वहाँ का होना पड़ेगा. वहाँ का होना पड़ेगा. इसी तरह से एक कस्टमर के पास में मैंने ये बात करके निकला और I got tremendous success. तो दूसरे कस्टमर ने कहा क्या फालतू बात कर रहे हो, उसका ओवर फ्लॉपी डिलीवरी. That's what I mean by sloppy delivery. If you want to achieve your goals of convincing, start working on your verbal and non-verbal communication skills. Listening. One of the biggest mistakes in sales marketing is the lack of active listening. To make customer feel heard and appreciated, we always want to listen at least twice as much as we talk. It's very important. कस्टमर को लगना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूं इसको ये बंदा इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसको ये बंदा ऑनर कर रहा है. मेरे ऑफिस में एक लड़की है, लाइक माय डॉटर. उसने कल विदाउट आस्किंग मी एक एलआर, मैं फोन पे बात कर रहा था और उसने वो एलआर का फोटो निकाल के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया. मुझे बहुत हेल्प हो गई, विदाउट टेलिंग हर एनीथिंग. जस्ट मेरा फोन पे बात सुन के उसने वो मुझे एलआर, थैंक यू वेरी मच सर, यू आर मोस्ट वेलकम. हेल्दी एक्सचेंज. I noted with thanks that she has sent me a help
without demand. And what she has built is, I reciprocated her action with obligation. That's what happens with customer system. You have to reciprocate whatever you have listened. कस्टमर ने जो बात किया है उसको आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको आपके कमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे। आप कब कमेंट प्रेजेंट करेंगे? जब आपने वो बंदा क्या बात कर रहा है वो केयरफुली सुना है, to make customer feel heard and appreciated. आपने सुना है और आपने उसको एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है। We always want to listen at least twice as much as we talk. जितनी हम लोग बात करते हैं कस्टमर के सामने उससे 2 गुना ज्यादा, डबल हमको सुन के लेना है कस्टमर से। मैं आपको कल का इंसिडेंट, परसों का इंसिडेंट, आई वाज इन अ टीम्स मीटिंग विद one of the engineering teams in Pune. मैंने रिसेंटली एक विजिट किया था चेन्नई में, मद्रास फर्टिलाइजर्स, एक विजिट करके आया था मैं लास्ट 15 डेज बैक। और वहां पर मैंने कुछ डायमेंशन लिए थे, कुछ टेक्निकल मैकेनिकल पॉइंट्स लेके मैं वहां पर एक नोट डाउन करके लेके आया था। वो मैंने रेसिप्रोकेट किया कस्टमर के साथ में। उसने कहा ये ठीक लग रहा है, आप मुझे ऑफर भेज दिया, टेक्निकल ऑफर मैंने भेज दिया। वो टेक्निकल ऑफर के ऊपर डिस्कशन थी। टोटल 6 प्रोडक्ट्स मैंने उसको ऑफर। कस्टमर के इंजीनियरिंग के साथ में मैंने कभी बात नहीं किया था वो टॉपिक। एंड दे मिक्स्ड all the combination of products which I proposed. ये साइज गलत है, ये आपका ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। वो back of my mind I'm thinking, साइड पे मैं जाके आया हूँ, डायमेंशन मैंने लिया है पूरा दिन खड़ा रह के, उनके जो ड्राइंग में पॉइंट्स थे वो मैंने नोट डाउन किए हैं। ये बंदा पूना में बैठ के मेरे को क्या सिखा रहा है? The confrontation started. I started confronting the customer. मैं साइड पे गया, मैं बोल रहा हूँ ये 3000 by 2000 है। How can you tell me ये 3000 by 990 होने चाहिए? वो भी मैंने सीरियल नंबर 5 में लिखा है। आप वही सेम साइज का फॉर्मेट आप सीरियल नंबर 3 और 4 पे कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटा चल रहा था हमारा डिस्कशन एंड we were exchanging our points, but with respecting the customer. तो कस्टमर को कभी ऐसा नहीं लगा कि उसको कुछ गलती आप उसकी पॉइंट आउट कर रहे हो। कस्टमर को मैं यही प्रिटेंड करता रहा कि आई एम नॉट अंडरस्टैंड। आई वाज स्टिल उसके साथ में आर्ग्यूमेंट मेरा चल ही रहा, बट इन अ वे दैट I make him feel that I did not understand. फिर मैंने केयरफुली उनको बोला कि आप आपस में डिस्कशन कीजिए, आई एम लिसनिंग टू यू। उनके इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे, सब लोग थे उस मीटिंग। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आई कुड मेक इट आउट दैट उनको 3 और 4 नंबर सीरियल चाहिए ही नहीं, और जो मैंने सीरियल नंबर 5 में लिखा है उसको स्प्लिट करके उनको 3 और 4 में चाहिए। वही रिक्वायरमेंट है। 3000 by 200 2000 ही है, सिर्फ वो बोल रहे हैं कि हमको 3000 by 990 के 2 चाहिए। मैंने जो 3000 by 200 2000 का एक दिया था प्रोडक्ट, उनको 3000 by 990 के 2 चाहिए। और वो सीरियल नंबर 5 के ऊपर बात नहीं की। दैट वाज देयर मिस्टेक। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीरियल नंबर, स्प्लिटिंग द सीरियल नंबर 5 एंड मेकिंग इट 3 and 4। क्योंकि मैंने मेरे एट द बैक ऑफ माय माइंड मैंने फर्म कर लिया था कि ये बंदा कौन है मुझे चैलेंज करने वाला। वेयर आई हैव गॉन टू द साइड, आई हैव
been there in the site. मैंने दिन भर वो नीचे जाओ ऊपर जाओ पूरा एफर्ट्स मैंने डाला था. How can he challenge me on those dimensions? वो मैंने back of my mind मैंने fix कर लिया. That was limiting myself from understanding my customer needs and requirements. जब मुझे लगा कि something else is the requirement, तब मैं बैकअप पे आ गया. मैंने उनका पूरा डिस्कशन समझ लिया. फर्स्ट आई अंडरस्टूड देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. इसके बाद में जब फाइनल पिच मैंने किया एक ही सेंटेंस में, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, these two sizes are 3 and 4 and the fifth one you want new one. They said you are very correct. We come to that frame. मेरा एक्सपीरियंस है न्यूमैटिक्स में, मेरा एक्सपर्टीज है न्यूमैटिक्स में. ये बंदे को न्यूमैटिक्स का पी भी मालूम नहीं, ये मुझे क्यों सिखा रहा है. ये होता है अभी लास्ट वीक में मेरे साथ में. Listening. The more we understand what our prospect is saying, the better we would know when the moment arrives to make our pitch and close the sales. आधा घंटा सुनने के बाद में जो मुझे समझ में आ गया वो मैंने एक लाइन में क्लोज कर दिया. कस्टमर को तो मेरा सोल्यूशन मालूम नहीं था, उसको सोल्यूशन चाहिए था मुझसे, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करने में, कस्टमर का रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने में मैं खुद कम पड़ रहा था. Because of some frame of mind which I have made out of the first 10 minutes of discussion. It's very important, very critical. The more we understand what our prospect is saying, the better we would know when the moment arrives to make our pitch. मैंने कब pitch करना है, मैंने उसके साथ कब बात करनी है, and when I am going to close the deal. That's the power of listening. Identifying prospect and convincing. Understanding the needs. One more skill which all of you should have, including me. To give clients what they want, we need to learn more about their needs, their desired benefits from our products, and their plans for next 5 years. Why is it important to understand their plans for 5 years? Maybe 5 years I have made it as an example, but then for 1 year, 2 years, why not 3 years, 4 years? It's important to understand the requirement of product along with its life, because then you are going to get that sales or that business for next 5 years. उसके हिसाब से आपको आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप आपका प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं. आपको मालूम है आपका प्रोडक्ट कहाँ जाने वाला है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल. It's necessary to personalize our presentation to each buyer and adjust the sales process to buyer's timeline. Buyer's का timeline वो भी एक important होता है. What is buyer's timeline? अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल दिया. आई एम प्रेजेंटिंग 20 slides at each product presentation for 21 presentations during 6 months. मुझे एक जगह पे, I was in छत्तीसगढ़, कोरबा. उसने बताया हमने आपको 2 घंटा अलोकेट किया था. We have allocated you 2 hours because of our some urgent meetings planned at 4 o'clock. हमने वो जो 2 घंटा था उसको आपको प्रेजेंटेशन को 1 घंटे में खत्म करना है. मैं वो जो प्रेजेंटेशन 2 घंटे के लिए बनाया था उसको 1 घंटे में डिलीवरी करना है. Can I make it 1 hour and 15 minutes? Is it possible? Is it good? नहीं. जो कस्टमर ने टाइमलाइन दिया है उसको ऑनर करना ही है. अगर कस्टमर को मैंने फोन किया, हेलो कस्टमर, is it good time to talk to you?
हाँ सर बोलिए, 2 मिनट के लिए आप बात कर सकते हो। आई शुड फिनिश माई डिलीवरी ऑफ माई थॉट्स, प्रोसेस एंड सेल्स स्पीच विद इन 2 मिनट्स। अगर मैं कस्टमर, आई नीड योर 5 मिनट्स एंड वुड लाइक टू डिस्कस द प्रॉब्लम विच हैज हैपेंड ड्यूरिंग लास्ट डिलीवरी, मुझे 5 मिनट में वो खत्म कर। कस्टमर ने कहा आपको, आप आधा घंटे में आइए, मुझे आगे का आधा घंटा फ्री है, मैं आपको बोलूंगा कि आप आधे घंटे में वहां पर पहुंचे। इट इज नॉट पॉसिबल, कस्टमर को बोल दीजिए। उसका टाइमलाइन जो है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके शेड्यूल के हिसाब से उसने उसको प्लान किया है। ऑनरिंग द बायर्स टाइमलाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेल्स में जो डिसीजन मेकिंग रहता है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, एक इसमें इसमें पूरे इसमें एक की पॉइंट मैंने नहीं डाला है, भूल गया, दैट इज आइडेंटिफाइंग द की पर्सन, द डिसीजन मेकिंग पर्सन इन कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक बहुत क्रिटिकल फिलॉसफी है, बहुत क्रिटिकल स्किल्स है विच यू शुड नो। एक बंदा ऐसा प्रिटेंड करता है कि आई एम द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, लेकिन वो डिसीजन नहीं रहता, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं रहता है। उसके पीछे साइड में, अगल में, बगल में कोई ना कोई रहता है जो कि डिसीजन लेता है। ही इज जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दोस डिसीजंस। तो आपको इन्फ्लुएंस, आपको क्या करना है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसको इन्फ्लुएंस करना है। अगर आप ये बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आपके फेवर में डिसीजन नहीं आने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी। आई एम सॉरी, आई लुकिंग फॉरवर्ड। The decision making, you need to identify who is the decision making authority. Very critical. आप गलत बंदे को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं if you do not know the decision making authority. Most of the times in smaller organizations, the owner or the director of that company is the after decision making authority. जो इंजीनियरिंग करता है वो पर्सन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है, क्योंकि उसको उसके प्रोडक्ट में लगने वाले दूसरे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है वो फाइनली मालूम रहता है। सो यू शुड नो whom to influence in an organization. इन्फ्लुएंस क्यों करना है? क्योंकि उसका डिसीजन आपको आपके फेवर में करना है। आपको क्या चाहिए आखिर में? उसके पास से एक परचेस ऑर्डर चाहिए। ऑल दिस प्रोसेसेस एंड फिलोसॉफी एंड थियरीज बॉइल डाउन टू वन पेपर, परचेस ऑर्डर। दैट्स व्हाट कंपेलिंग इज। आई मिस्ड दिस पॉइंट, इन्फ्लुएंसर। I missed this point in presentation, that's why I explained this. Compelling decisions, yeah. I have one question. Please, please. How to identify the decision maker? What is your theory on it? Because when I was visiting the customer, I was visiting the same person regularly, but I know that person is not a decision maker, but I was visiting that person regularly. What happens in, especially in smaller or middle-sized organization is, they will allocate one person to meet all the vendors. जो परचेस वाला रहेगा या इंजीनियरिंग का बंदा रहेगा, उसको ही वो बोलते हैं भैया ये वेंडर आएगा, उसको जाके मिल ले, उसका क्या है, उसके पास से ऑफर ले ले और मुझे दे दे, मैं देखूंगा क्या करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन बट उससे आगे नहीं जा रहे हैं। आप उसके आगे नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं। नहीं जाते। How can we crack that? वो पाटिल ऑटोमेशन में वही हुआ है। Ravi Karala is the डिसीजन मेकिंग पर्सन वो समथिंग front end है सिर्फ। वो सिर्फ फ्रंट एंड है। उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन दे रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, ये आपको वहाँ का सिक्योरिटी बता सकता है,
वेरी क्लियर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वहां पर जो वर्कर है काम करने वाला, देखो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वहां पर 10-20 से ज्यादा लोग काम नहीं करते। वहां पर जो सीनियर वर्कर है या वो वन पर्सन हु इज वर्क देयर फॉर 3-4 इयर्स, उसको पक्का मालूम रहता है अरे ये सब सिर्फ वो बंदा लेता है, ये सिर्फ कागज घुमाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। आपको वो इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करना ही है, तभी आपको उसके डिसीजंस आपके फेवर में आएंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको आपके कॉम्पिटिटर से भी मिल जाती है, आपके फ्रेंड से भी मिल जाती है। ये इंफॉर्मेशन लेने का सबसे आसान तरीका है, जो बंदे को ऑर्डर्स मिल रहा है, नॉट न्यूमेटिक्स। कोई भी make। मोटर हो, गियर हो, बियरिंग हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, कुछ भी जाए, स्टील का मटेरियल वहां पर देता है बंदा, रॉ मटेरियल दे रहा है, उसको जाके पूछो, वो आपको बताएगा यार ये कौन से बंदे के पीछे लगा, तो उसको मिल। ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाती है। And the pneumatics person fellow, your colleague with your competitor won't tell you this information. Definitely not. नहीं बताएंगे। लेकिन आप वो मोटर वाले को जाके पूछ लो तो आसानी से बता देंगे। आसानी, उसको कुछ लेना देना नहीं ना। आप न्यूमेटिक्स बेच रहे हो, वो मोटर बेच रहे हैं। जब इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तब इंफॉर्मेशन शेयरिंग बंद हो जाती है। उसके रिलेटेड नहीं है तो उसके रिलेटेड है नहीं। होता है सर अपने साथ कई बार होता है। वही बात। अपने मतलब एसएमसी के फ्रेंड हैं, सेम इंडस्ट्री में जाते हैं, बता Information नहीं। बिल्कुल नहीं पता। हालांकि हम सेम इंडस्ट्री में दोनों जा रहे हैं, बट वो ये नहीं बता रहा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, किस जगह पे। मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आई विल शेयर दैट। आई वाज ट्रैवलिंग टू नागपुर, बहुत बार गया था मैं नागपुर में, और वहां पर एक कस्टमर है जो कि ह्यूज क्वांटिटी में सीजनली न्यूमेटिक्स लेता है। एंड आई डिड हैव ऑल द प्रोडक्ट्स टू ऑफर, लेकिन जो बंदा वहां पर प्रॉपर मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा था। बेचारा एक सरदार जी बैठे रहते थे परचेस में, वो आते थे, कार्ड लेते थे, बोलते थे इंक्वायरी भेज दूंगा, कभी नहीं भेजते। 3 साल, एक तो नागपुर नजदीक में है नहीं, और वो भी आउटस्कर्ट्स में था नागपुर। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम बाय ट्रेन, तो मैं मेरे फ्रेंड के हाथ में बात कर रहा था फोन पे। वो मेरे बगल में जो बंदा बैठा था इवनिंग में, उसने वो सुन लिया। अरे सर, आप वो कस्टमर के पास जा रहे हैं क्या? हाँ यार, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, नाम एक्सचेंज हो गया। वो भी नासिक का, मैं भी नासिक का। ऑल्दो आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम बॉम्बे। आप बोल रहे थे आपके कोई कलीग को कि आपको वहां से बिजनेस नहीं आ रहा है। हाँ यार, 3 साल हो गए हैं, तो मैं सरदार को मिलता हूँ, कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। सीधा किसी को पूछने का नहीं, वो अंदर केबिन है ना, उधर घुस जाइए। किसी को, आपको कोई वहां पर जाने ही नहीं देगा। वो बंदा खाली बैठा रहता है। ही विल वेलकम यू, ब्रॉड स्माइल, बहुत अच्छा बंदा है। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 2 साल हो गए तो मुझे वहां से बिजनेस से बाहर निकल के, वो बिजनेस से बाहर निकल के मुझे 2 साल हो गए रोटेक्स में सुना। लेकिन वो बिजनेस आज भी उनको ही मिल रहा है, रोटेक्स को ही मिल रहा है। ट्रेन में इंफॉर्मेशन शेयर हुआ है बॉस। वो क्या बेचता था वहां पर? गियर्ड मोटर बेचता था। क्रॉम्पटन का बंदा था, पुणे में ही कंपनी, ग्रीव्स कॉटन, ग्रीव्स कॉटन, चिंचवड, उसका बंदा था। ऐसे इंदौर में गया, सेम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हाउ इट हैपेंस, और इन्फ्लुएंसर का नाम कैसे मिल जाता है। इंदौर में मेरे बहुत अच्छे कस्टमर थे, उन्होंने नया फैक्ट्री खोला था, उसके इनोवेशन के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था।
इवनिंग में उन्होंने एक डिनर रखा था, इवनिंग में ही इनॉग्रेशन था। उनके जो परचेसर थे उनको मिला मैं, उनको ग्रीट किया, उनको बुके वगैरह दिया, उनके सीईओ को जाके मिल गया। वो जो परचेसर था वो बोला, अरे वो मिला क्या तुमको, पुणे से ही आया, वो भी तुम्हारे साथ में आया रहेगा। बोला कौन है? ऐसा विनोद मोरे करके बंदा है। अच्छा मुझे मिला दीजिए, मुझे भी इवनिंग में कोई टाइम पास था नहीं, मुझे वो उनके फैक्ट्री से वापिस इंदौर भी जाना था, तो हम दोनों साथ में निकल जाएंगे। तो उसने मिला दिया, हम गपशप करने लगे, ये वो हो गया। तो फिर आप पुणे में क्या करते हो, कौन से एरिया में जाते हो, क्या कस्टमर है, ये वो। वहाँ पर मेरा एक कस्टमर था जिसको मैं बहुत प्रेस कर रहा था फॉर गेटिंग बिजनेस। मैं वो XYZ बंदे को जाके मिलता था वहां पर, जो कि एक्चुअली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी था। नहीं, ऐसा नहीं। अभी डिफरेंस समझिए इन्फ्लुएंसर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में। उसने कहा अरे नहीं यार, वो डिसीजन तो वही बंदा लेता है, नो डाउट, लेकिन उसके बगल में जो बैठता है ना, वो थोड़ा मोटा बंदा है, वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंसर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो दीज आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को मैं मिल रहा था, लेकिन मुझे बिजनेस नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके बगल में इन्फ्लुएंसर बैठा था। Information with respect to sales is always welcome, and it all depends on how I use it. Compelling decisions. To convince our buyers, we must spell out benefits for the person you are selling. A persuasive salesperson always gives out a personalized solution that will help achieve customers' goals. By proposing the best possible solutions, we are leading them to discover their own best decisions. हम क्या दे रहे हैं उसको? सोल्यूशन दे रहे हैं। कैसे सोल्यूशन दे रहे हैं? जो कि उसको पर्सनली बेनिफिशियल रहेगा, पर्सनली मतलब कंपनी को, और मुझे भी वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मुझे उसकी तरफ से वो ऑर्डर आने वाला है। कंपेलिंग डिसीजन, I will make such a solution that no one other can offer. If they offer, I will be the first person to receive the sales. Building relationship, of course. Being salesperson, our first job is to develop rapport with the customer. Rapport building is a huge part of running business, but most persuasive salesperson is genuinely interested in other people beyond sales. We need to make personal connections with our client to maintain and strengthen our business relationship. Of course, being in sales for many experienced years, you all know what rapport is and what is the importance and what is its requirements. वो पानी बातें करते करते हम कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बना लेते हैं। That's what is called rapport. मुझे मैं आपको rapport का I will give you a very good example. There is a customer in Coimbatore, and Mr. Murugan was the design person in that company. He left that organization and joined one company in Baroda. He went for a meeting in L&T. L&T had a consulting division in Baroda, oil and gas sector. They were manufacturing these dampers, and L&T person asked him few questions which were related to pneumatic cylinders, circuits and positions. Now this guy, Murugan, was hardly 1 month old in that organization,
and did not know anything about numerics. Being expert in damper and damper designs and damper manufacturing. That guy assured L&T person that I will bring Shirish Joshi next week on Wednesday and we will discuss this. He called me, I went there, I only changed the timing. It was scheduled in morning time. I requested him to reschedule in the afternoon time because it was going to take me some time for traveling from Pune to Baroda. And he did it. We completed the discussion, and the lady she was the instrumentation head in L&T. She asked Murugan, everything is fine. You closed all the points. Tell me one thing. We were sitting in the meeting and we asked you some questions and you upfront told me that a person from Rotex will come down to Baroda and answer all your questions, queries. How is it possible? How you were so confident about Shirish that he will come down to Baroda on same day, same time and deliver all your requirements? He said, Shirish Joshi is the person who has helped me in the past and I know him personally. हम लोग सिर्फ 2 बार मिले थे. Murugan and I met only 2 times. We had long discussions on phone. But that was the reputation of Shirish Joshi with Murugan, which built his confidence that Shirish Joshi would provide me a solution. That's the importance of reputation. That's how your strong relationship or rapport with customer should be. That he should be 100%. He should take you for granted to provide a solution for his requirements. That's what we call a salesperson rapport. Right. अक्षता की शादी कब हुई? अक्षता की शादी कब हुई? हाँ, दीदी। Do we need a break, guys? ब्रेक ले लेंगे? यस, वही सुनी। आपको भी थोड़ा सा बोल के थक गए हो गया।